अपने आप में पैशन को दिखाता है। मैं आपके अंदर बसे परमात्मा को और परमात्मा के दिए इस पैशन को नमस्कार करता हूँ। भगवान करे ये जीवन भर आप लोग दीर्घायु हों और जीवन भर ये पैशन बना रहे, हम लोग मिलते रहें और शास्त्र चर्चा करते रहें। आज कैंसर डे नहीं है, फिर भी हम लोगों की 347वीं यात्रा आज अवधेश जी के कारण हो रही है। मैं उनका आभार मानता हूं कि उन्होंने बहुत कम नोटिस में एक इनविटेशन भी स्वीकार किया और एक अलग परंपरा, अलग पैथी, अलग चिकित्सा थेरेपी, होलिस्टिक थेरेपी को हमें इन ज्ञान दर्शन करने के लिए, मार्ग दर्शन करने के लिए उन्होंने हाँ भरी। आप लोग यदि आज्ञा दें तो मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। आज जादवपुर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर त्रिगुण सेन ऑडिटोरियम में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से मुझे प्राइड ऑफ बंगाल का वंग गौरव सम्मान हासिल हुआ है। ये जो अवार्ड है इसका केवल पूरा का पूरा जिम्मा मैं आपको सौंपता हूं। ये सभी कुछ आपके लिए है और आपके द्वारा ही मेरे को आया है। एक 2 मिनट का केवल वीडियो दिखाना चाहता हूं। এরপর স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজজি স্বামীজির রাতুল চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এবং সেরা বাঙালি অ্যাওয়ার্ড 2022 প্রগতি বাংলা উৎসব 17তম বর্ষ আমরা সেরা বাঙালি অ্যাওয়ার্ড 2022 তুলে দিচ্ছি স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজজিকে। একটা জোরে করতালি সকলে মিলে আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমরা স্বামীজিকে প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই, অনেক অনেক শুভকামনা জানাই। এরপর ডক্টর পবন শর্মা মহোদয়কে আমরা সেরা বাঙালি অ্যাওয়ার্ড 2022 তুলে দিতে পেরে আমরাও সম্মানিত। একটা জোরে করতালি সকলে মিলে। आज एक संस्था ने सभी लोगों के सामने जो सम्मान दिया, ये आपका सम्मान है। मेरे अकेले के बूते की ये बस की बात नहीं थी जो आज तक हम चलते चले आए। 347वीं वेबिनार, सब चीजों के लिए सम्मान, वो भी एक नॉन बंगाली को शेरा बंगाली सम्मान, ये सब आप लोगों की उपलब्धि है। मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इस यात्रा में मेरा साथ दिया। मैं डॉक्टर अवधेश जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर अवधेश जी एलोपैथी के जरूर हैं, की आत्मा मुझे लगती है कहीं ना कहीं हमारे पूरे संस्कारों से आवृत्त है, वो आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। MBBS, DRM, ENB, MNAS, MD, Senior Consultant Nuclear Medicine in Radiology Department, Assistant Professor, Nizam's Institute of Medical Sciences, Hyderabad, international publications, 20 national publications, 200 oral presentations, Young Scientist Award. So there are many achievements in his CV, and I wish him to achieve more and more heights beyond the sky in life. Welcome, Doctor. जी, आपका आवाज थोड़ा, there is a crackling in your microphone. जी, अब ठीक है? आवाज अब ठीक है सर? नहीं, अभी थोड़ा और चाहिए। नहीं, अच्छा, अब आ गया। जी सर, थैंक यू सर। जी, मैं स्वागत करता हूं अवधेश जी का। आज का दिन उनका है, ये वेबिनार उनकी है, हर वेबिनार उनकी है, लेकिन आज स्पेसिफिकली पूरी की पूरी उनकी है। स्वागत है।
सुनील आर्य जी, सर। नमस्कार, स्वागतम स्वागतम। मैं at the outset I would thank the organizers, especially पवन जी, मदन जी, इन्होंने बहुत ये करके हमें बहुत मान सम्मान दिया। शायद हम इसके काबिल ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं that they gave me a chance to come on this platform and speak to this August gathering. कैंसर का नाम सुनते ही कोई एक टीस सी शरीर के अंदर घुस जाती है और ये समझ नहीं आता है। Am I audible, sir? I think I am. Yeah. एक कुछ समझ नहीं आता है कि इसके आगे क्या किया जाए, क्योंकि हम लोग डायग्नोस्टिक्स में हैं, मॉडर्न मेडिसिन में, और मैं न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूं। तो सभी कैंसर के पेशेंट्स मेरे क्षेत्र में मेरे से होके ही वो जाते हैं, क्योंकि पहला डायग्नोसिस और फॉलो अप और किस थेरेपी के बाद कितना फर्क पड़ा, ये देखने के लिए हम स्कैन्स करते हैं, पेट सीटी, गामा कैमरा स्कैन्स and all these scans, and then we give a report of progression या regression. तो चूंकि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और कई शहरों में करता हूं, इसलिए मेरा थोड़ा सा बड़ा वास्ट सा एक्सपीरियंस है। क्योंकि कई शहरों में, अब कोई अगर बोले, कोई अगर चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता है तो उसको चंडीगढ़ या इस एरिया का मालूम होगा। हम चूंकि कई शहरों में करते हैं, इसलिए हमें बहुत से नॉर्थ इंडिया का डेटा ऑलमोस्ट है हमारे पास। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि इस बात की गंभीरता को मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं। इज इट ओके सर इफ आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? अवधेश जी, I am comfortable, मगर एक चीज है जी, this recording might be accessed by other people. So if you feel there is something non-Hindi followers can gain from this topic, then please choose a language that you feel, because it's your contribution today. Okay, sir. So, Pawan ji, may I request you in 5 minutes time, you will get the slides. I have told one of my assistants to make these slides and he will be sending it to you on your WhatsApp, and I would be very, very obliged if you share those. And I should introduce my co-panelist and a good friend of mine, Dr. Sunil Arya. He is practicing Ayurveda. So I would, Dr. Sunil, I would request you to speak a few words about yourself. मैं आयुर्वेद का अभ्यासक हूँ और विद्यार्थी भी हूँ। पिछले 25-26 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ और आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस करता हूँ, मॉडर्न मेडिसिन वाला नहीं करता हूँ, जैसा कि आमतौर पर आयुर्वेद वाले करते हैं। और काफी समय से हम लोगों के बीच में आयुर्वेद के लाइफस्टाइल, डाइट स्टाइल, उन सब तौर तरीके और जो छोटे छोटे सिद्धांत हैं, जैसे लक्षण नदीन भुंजित, विरुद्ध आहार, इन सब के विषय में हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। सुबह के लेक्चर से, दिन के किसी लेक्चर से, या पब्लिक गैदरिंग कहीं पर भी, योगा वाले सेशंस जहां होते हैं वहां पर जाकर के भी किसी न किसी तरह से लगभग रोज या हफ्ते में 2-3 दिन हमारा ऐसा रहता ही है। इसके माध्यम से हम एक ऐसा मोमेंटम खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर आयुर्वेद की स्वीकार्यता, जो कि जनमानस से पहले से ही है, उसको वैज्ञानिक आधार पर दे करके और इस भरोसे को वापस लाया जाए कि रोग से लड़ने के लिए दवाओं से ज्यादा अपने भीतर की चीज, भीतर की ताकत, इम्यूनिटी, वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर अवधेश पांडे जी से भी हमारी मुलाकात लगभग 1.5 वर्ष हो गया है और मैं इनसे काफी प्रभावित रहा। किस तरह से एक आधुनिक विज्ञान, एलोपैथिक के एक स्कॉलर होते हुए भी जिस तरह से उन्होंने सही बात को सही कहा और कहने का साहस किया,
और उसी टेक पर चलते हुए वो बड़ी मजबूती से जो सही है, जो सच है, उस बात को सामने रख रहे हैं। तो इस नाते हम लोग मिलकर के भी कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इस काम को और गति से, तेज गति से समाज में फैलाएंगे ताकि सही बात लोगों के सामने आए कि रोग से लड़ने के लिए आपका डाइट स्टाइल, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट अल्टीमेटली यही जरूरी है जी। चाहे वो कैंसर हो, चाहे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई और बड़ा इशू हो जी। जी, thank you, Sunil ji. So at the outset, I should ask people, or rather, had it been a more interactive session, I would have got those questions. Why are we facing so much cancer? Have we ever thought about it? Because that is the first step of prevention. You can actually prevent it. So have we identified number 1, number 2, number 3, number 4, number 5? What are the reasons why we are getting cancer? So what I feel is, according to my limited experience, I should tell you what are the reasons why we are getting so much cancer. Then we will come to the how we cure it in the modern world, and how is my approach working on patients at this point in time, and patients are actually benefiting a lot. So this will be the structured, it will be in 3 chapters. The first is, why do we get cancer? So the first and foremost reason, if you ask me, is हम धरती से कट गए हैं, हम धरती से कटे हुए लोग हैं. The negative and the positive energies that are traveling, ये एक बहुत अच्छा तरीका था while we were grounded. तो ये ग्राउंड में अर्थ हो जाती थी. ये नहीं होने से, somebody might be thinking that this is an unscientific statement. At the outset, I should tell you, I will never say anything which I cannot prove by scientific means. So what you do is, कोई अगर if somebody's blood is thick, वो अगर blood thinners पे हैं, what they can do is, they can do a test first, however they are, then they should go and sit on the ground with their feet on the ground, on the grass, and after half an hour, do a viscosity test of the blood. Do it before, do it after. You will get it. You will get what I am talking about. So the viscosity of the blood decreases if you are grounded. We need to understand that these charges that do not get a vent to go out are actually increasing the viscosity, plus the lifestyle that is there. The first is stress management. Now, stress, why I am stressing on stress is the day, suppose if there is a lion or a fire has started, I have to run. So what are the biochemical changes that are going to happen in the body? The first and foremost is your immune system is going to shut down. Your immune system will shut down at stress. And fortunately or unfortunately, you have only one protector, your immune system. We call it God because it is a generator, operator, and destroyer. The generator is the microbiome. जैसे बर्थ पैसेज से निकले, द फर्स्ट टाइम जब मदर्स बर्थ पैसेज से माइक्रोबायोम आ गया, दैट इज द फर्स्ट सीडिंग ऑफ द माइक्रोबायोम. दिस माइक्रोबायोम स्टार्ट्स योर ब्रेथ. ब्रह्मा, life has started. This very microbiome with further seedings maintains you throughout life, Vishnu. And when the person or the animal or जिसमें भी चेतन है, चेतना है, if that thing is dead, that same microbiome उसको ये गला के पंच तत्व में मिला देते हैं, महेश.
So your immune system is your God sitting inside you. And during stress, this immune system gets shut down. Now, during stress, when the immune system is shutting down, see what are the changes that are happening. You cannot fight any disease. You are fighting an external enemy. So an internal problem cannot be fought if you are fighting externally. Or if there is an internal problem, you will collapse. This is a very big reason why we are getting from infection to cancer, and we are not being able to cure it because of our lifestyle, and our stress management techniques are not right. So somebody might say, stress might not be very, I will give you scientific proof of how stress can cause a disease and how de-stressing can cure a disease. Anyway, so that is the first. The second is the food that we eat. The way we conduct ourselves these days, we have become so selfish. And why I am saying all this is, while I am summing up, I will sum up. We have become so selfish. We want everything for ourselves. And we want more money. I don't know where that money will go, but we want more money and more money and more money. So what we are doing is, if suppose I am selling something, I am adulterating it, making it more so that I get more money. Now, likewise, the whole seeding, the whole agriculture is polluted today because we are not using normal foods what we used to use. So these are GMOs, genetically modified. And the fruits that we get in the market these days are all injected with some hormone. So don't you feel that we are, as far as food is concerned, we are a hormonally challenged generation? I would use that word, hormonally challenged, is why रात को नींद नहीं आती है, because pineal gland is not working properly. It's an endocrine gland. थायराइड का प्रॉब्लम हम क्योर नहीं कर पाते हैं. कैंसर ब्रेस्ट हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसके नीचे आ जाइए. डायबिटीज हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसके नीचे आ जाइए. ब्लड प्रेशर, बिकॉज ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड्स, वी आर नॉट एबल टू क्योर इट, उसके नीचे आ जाइए. PCODs, ovarian problems, conception problems, all are hormonal issues. Prostate, all these are hormonal issues, and this is the hormonal challenge. So we are a hormonally challenged generation, and whatever food we are taking from outside is either genetically modified, it is altering your hormones, or if you are a non-vegetarian, you are consuming hormones and antibiotics, which is further degrading your microbiome, which I just talked about. As a result, and thirdly, we are not exercising the way we are meant for exercising. If you don't exercise, you get sick. You get sick, and we don't realize that. We are busy for I don't know what, but we say that we are busy, we don't have time for exercise. We are trying to cheat ourselves, and in the process, we are getting diseased. So that is these are the few reasons why we are getting cancer. Now, as far as modern medicine is concerned, Pawanji, can I request you slides, if they have come, can you project those slides, sir? Have you sent me? Somebody else would have sent you, sir. My assistant, I sent your number. So they would have sent you in your WhatsApp. If it is matter of 2 or 3 hours, I hope nobody has sent. Okay, sir. Okay. Nonetheless, not an issue, sir. So if you
look at this, how we are progressing and how we are getting cancer with lifestyle, with diet, with. Now, I will go to the next level. Before going there, let us come to things which we can quantify. Suppose if we are friends and, you know, in the back of my mind, I am enemy to that person. My hormonal level is challenged. Because I am feeling bad about him, my hormonal level is challenged. And we are giving negative vibes to the cosmos. At the outset, however, many people who are listening to me, as I told you earlier, I would never say anything which I cannot prove by science. If I cannot prove, I'll keep quiet. I'll not say. Now, the cosmic forces heal. How many of us think the cosmic forces heal us? How many of us? So it is good for theory, people might be thinking. I will give you a demo. It will be a very, 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 very interesting demo. This is your hand. These are ye lakire hain. These are the vertical lines here. There is a horizontal line here. I would want everybody to actually do it, what I'm just about to do. Then only you will see how the cosmos works. I'll just show you. This is a horizontal line. You have the same line here. You make these, you join these like this. And you fold your hands. You will see one of the hands is slightly bigger than the other. Like, for example, in this, mine is left is slightly bigger. So I have to make the right bigger to actually match it. You just lift it up and say to the cosmos that you want your fingers to be bigger. You want your fingers to be bigger. You want your fingers to be bigger. Now do it again. And see, your fingers are already bigger. Do it. This is cosmic force. This is what is cosmic energy. This is how the cosmos works for you. Which is why, if you are saying anything that is negative, trust me, it comes back to you. So this is just, I just showed it to you and proved it to you. Thank you, sir. Next slide, sir. Yeah, so what is cancer? The cancer definition, it is actually a failure of apoptosis. Apoptosis is programmed cell death. So it's a mitotic pathology. The mitosis happens in each and every cell of the body, almost 24/7. It is happening. The immune system knows exactly how to control apoptosis. So if the immune system knows, the immune system has gone berserk because of stress and it is not working. So the programmed cell death is not working here. And the cells are mitotically dividing and divide, uncontrolled division, and cancer results. So mitosis is physiology. When mitosis becomes pathology, it's called mitotic pathology. Next slide, sir. Yes, so we know the war on cancer started after the Second World War, when Nixon declared a war on cancer in 1970. Till date, the war on cancer is continuing. Cancer is growing unabated, even though we have tried to wage a war against cancer. So there is some problem somewhere. Either the tools of the war are not, either the tools that we are using to conquer cancer is not right, or
this is a disease that we do not know about. Next slide, please. So in modern medicine, what we do is there is three-pronged approach: surgery, chemotherapy, radiotherapy. Surgery, cut it out. Radiotherapy, burn it. Chemotherapy, poison it. We are on the kill phenomenon. Cancerous cell is an inside cell. There are only two ways where you can get diseased. Either the pathogen is from outside or the inside body cells become pathogenic. These are the only two ways where you get any disease for that matter. So here, the inside cell has become pathogenic. And the inside cell, whenever it has become pathogenic, it is fully versed with your surveillance system. It is fully versed when you will try to kill it and all that. So it is very easily dodgeable by the cancer cells. That is why the immune system, even if it treats it as non-self, still it evades the immune system and survives and keeps on thriving. Why only survive? It keeps on thriving. Now, somebody might ask, you need to understand that, one cell in 9 months' time becomes a baby boy or a baby girl. One cell in 9 months' time by multiplication, that is a programmed multiplication. This is a non-programmed multiplication. The body has no control over the multiplication. So you can imagine if one cell goes berserk, what can happen in the next 1 month or 2 months or 3 months, and how the disease is going to progress. That is the quanta of what thought process should you undergo in case you are thinking about cancer. So surgery, radiotherapy, chemotherapy was the three-pronged approach. Now they have come up, they've realized that, by doing all this, we are not able to extend the life of the patient to a very great extent. Even if the life is extending, the quality of life is so poor that we are not able to do anything much for the patient. Next slide, please. So then then a new concept has come of immunotherapy. Can you go back to the last slide, sir? The last one. So the fourth prong that was added was immunotherapy. Okay, it's not mentioned here. Okay, sir. So the fourth prong that was mentioned is immunotherapy. Now everybody has realized, the scientific world has realized that, surgery, radiotherapy, chemotherapy is not enough. We have to do something else. And immunotherapy has come into the picture, which is equally good or bad. If surgery is good, immunotherapy is good. And if surgery is able to prevent cancer, immunotherapy too is able to prevent cancer. But unfortunately, none of these are working at this point in time. They're working to some extent. They are working, but an overall view is we are nowhere as far as cancer is concerned, and we have not reached anywhere. We are going round and round at the same place. I'll tell you how. Surgery means you take out the tumor, and if the tumor, you've taken out the philosophy of why the tumor was produced, unless that is attacked, this will spring up in some other place like the bones, and we call it metastasis. We have changed the nomenclature. The pathology is the same. So surgery, radiotherapy, we burn it at a few places. The pathology remains. What has produced the cancer, we are not concentrating there, so it will come back again. Surgery, radiotherapy, chemotherapy. Chemotherapy does the same thing. It poisons it. It
kills normal cells also and cancerous cells also, and chemotherapies work. I'm not saying they don't work. They work. But how are they working? You meet a chemotherapy patient before and after, he will tell you. Why should so our approach to cancer is somehow still the approach is not appropriate, not exact at this point in time. So they have come with immunotherapy now. Immunotherapy is, now they have realized that the immune system is empowered to kill the cancer. So if you can empower your immune system, it has the potential to kill all cancers. So how do you empower the immune system is the crux now. Some people say, Haldi pani pi lo, some people say, ye pi lo. This might be effective to some extent, but what we have forgotten is immune system. When you talk to a scientist, he will say T and B cells. And if you talk to a doctor, hematologist, he will explain you more about the immune system. Now the immune system is there. But what happened during the time of Corona? This immune system went berserk. And so if it can go berserk, that means something is wrong with the driver of the immune system. So our drivers of the immune system are not installed. We have not installed drivers of the immune system. And we had installed, but it is slowly going out of your life. The drivers of the immune system remain Daya, Maya, Mamta, Karuna. It's not there in your life. That compassion is not there. You are jealous. You are doing everything that you should not be doing. And then you expect health also. It's too much expectation. So these are the drivers of the immune system. One needs to install these drivers of the immune system right at the outset so that you don't get cancer. Next slide, sir. We just discussed about the immunotherapy. Next slide, sir. Yes. So what is the way forward? Now, at the outset, I should tell you, if a layman asks me, why does cancer happen? So from that, if your whole life, if it is concised into one day, what will that day be like? The time you get up in the morning till the time you sleep is your life. That's a bonsai of what I made a life on one day, suppose. So during this time, you make a lot of acid. Whatever you do, you make an acid. If you think something, an acid is made. If you do some physical work, lactic acid is made. If you eat something, gastric acid is made. So you are constantly producing acid. And the body is constantly in an acid-base balance and disbalance because blood is alkaline. If it turns acidic, you are gone. That is how in cyanide poisoning, people die immediately because the blood turns acidic. तो एसिडिटी में जीवन जलता है, alkalinity में जीवन पलता है. And the body has a tendency to make the body alkaline. So this acid-base balance needs to be fought. There are only 4 ways known to us how acid-base balance can be restored. Respiration, perspiration, urination, and defecation. In my limited knowledge, there is no 5th way to increase or decrease acid concentration in the body. So if you are breathing deep, you are doing alkaline breathing and you are getting rid of the acid that is there. Perspiration, you need to perspire. Since you can afford it, air condition is not good. I have
I pity those people who stay in countries which are always in snow and they can't perspire. That is, वो उनकी मजबूरी हो सकती है, भारत की मजबूरी नहीं हो सकती है, unless we. So respiration, perspiration, urination and defecation. What happens is, if you're constipated or if you have got a urine issues, or if you're taking less water, you will urinate less. So all this is acid accumulation is going on. Body, what it does is, it takes this acid and इकट्ठा करके कहीं ना कहीं भेजती है. If it sends it to the gallbladder, you get a gallbladder stone. If it sends it to the kidney, you get a kidney stone. If it sends it to the breast, you get a lump in the breast. If that breast lump starts its own angiogenesis and calcification, cancer results. So if I can come down to the nutshell, it is an acid-base disbalance that started everything. Now you can extrapolate this to your life situation. If suppose you are always angry, always you are in stress, you are producing more acid. We need to understand that. That is why relaxing way or stimulating the vagus nerve is a very good way. This, if it can be done 3 to 4 times a day, your acid-base balance will be fine and you will not have acid burden in the body. So that is as far as the pathology is concerned. So the way forward is, what we are doing in cancer at this point in time is, we have identified what Nobel Prize was given to Wagner in 1931, wherein he had taken out the mitochondria which were responsible for the genetic defect that has caused cancer. So how did cancer happen? Ultimately, the scientific world is thinking it's a genetic disease. So there is a genetic problem, and this gene, they are into gene therapy and gene repair, which is out of the world process. I mean, it is this is the reduction. ये reductionist सोच है. खंडित सोच कभी भी पूरे बॉडी को सही नहीं कर सकते. ये खंडित सोच है. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम क्योर कर देंगे उसको. हमने इसके लिए वी स्टार्टेड अ जीन मैपिंग पूल. This project started in 1999. By 2009, it had to be shelved because genes are okay. You are talking about genes and genetic diseases. Suppose if a person has got cancer colon, and that is at a certain place in the colon. If a second person has got cancer colon, and that is at the same very place where the first person has got, if you do a gene mapping, there are more than 60,000 gene aberrations in the first patient, and more than 60,000 gene aberrations of different kind in patient number 2, which means that each individual is different. You cannot have individualized medicine that, I'll do your gene mapping and keep your gene pool. When you get a disease, then I will see what it is. They are planning for that, but that is almost an impossible thing. So what is the way forward here? So I just told you, for people who did not understand, there are various kinds of genetic aberrations that have produced the cancer colon or the cancer breast, and there are 10,000 different kinds of genetic mutations that have produced a similar cancer in patient number 2. So this genetic mapping
Even if I have a drug which can cancel genetic, which can repair genetic a defect in X, I don't have a drug for Y. And I cannot make a factory which can make a drug for Y. And then Z comes, then I'll make another factory and make another drug, and 10,000 aberrations. You cannot have 10,000 drugs in your lifetime. So we need to understand that this is an impossible thing where we are going as far as genes are concerned and genetic things are concerned. Now, having said this, what is the way forward? The way forward is, if you can improve metabolism of the patient, this altered metabolism is going to do the gene repair by itself. And this is exactly what is happening to our patients whom we are doing this. We are, and the failure of metabolism is, you are having so much food that is not required. The body is not actually able to handle so much food that we are eating. It's not able to handle. Every 30 minutes, we need something to put in our mouth. I don't know why. And, that is what happens when you get more than what mankind. If you look at history of mankind, we have not eaten so much throughout history. We are eating so much, and we are expecting good health also. So all the best. And if you are expecting good health with so much food, I would just wish you good luck. It just cannot be. Now, the treatment that we do here at our hospital is, we alter the total food content of the patient totally. We totally give him raw food. Why? Because raw food, and we give him at a gap of 8 hours only 2 times. Why at a gap of 8 hours? We know by science that, if you are eating constantly, whenever you are eating simple sugars, your blood sugar is going high, it is spiking. Once the blood sugar is spiking, there is a spike in the insulin production also from the pancreas. Now, if you are eating again after 1 hour, there is blood sugar rise and there is spiking of the insulin from the pancreas. Now, each time the insulin spikes, the cell gets resistant to insulin. So we are dealing with insulin resistance in type 2 diabetes. Why I am saying this is, type 2 diabetes, insulin, the primary function of insulin is to take the blood sugar from the blood and put it inside the cell. That is the primary function of insulin. What is the secondary function? It makes you grow. So your face grows bigger, your stomach grows bigger. If there is a tumor, that grows bigger. So the first and foremost is, insulin resistance needs to be cut off. That is the first and foremost. The second is, sugar, simple sugar needs to be cut off. How do we diagnose cancer? If somebody might ask me that aapne to khana pina hi rok diya uska, we have to pursue science here. Whatever little science we know, we need to pursue that. Now, how do we diagnose cancer? We diagnose it with a PET CT. And what do we do in a PET CT? We inject 18 FFDG. 18F is the isotope of fluorine, 18F, and FDG is fluorodeoxyglucose. So we inject this and cancer absorbs the glucose immediately. So is it rocket science to see that cancer loves glucose? If you love glucose, cancer also loves glucose. If you have to beat the cancer, you have to cut its food chain.
So you have to cut sugar completely cut sugar, and then put the patient on raw food. Why raw food? This is reparative food. This will also, once your stomach is, have you ever realized how you would breathe deep? Why in fasting you start breathing deep? The lungs and the abdomen are divided by a diaphragm. So if you are fasting, your diaphragm goes down and it makes the lung expand. So you breathe in more, which is why if there is a deficiency, so if you're breathing more, you are alkalizing your body. That is why only 2 times food. That is the first thing. The second is insulin. As I've already mentioned, we cut the simple sugar, so the insulin concentration is normal usually in these patients. They cure their diabetes immediately in 2-3 days time. And the third is we have to restore their metabolism to such an extent and reassure them. And then this is what we do as far as what is seen. So what you are seeing here is the Annamaya Kosh that we are touching. The next we touch is the Pranamaya Kosh, wherein we tell him to do yoga, we tell him good things about the country, about the place where he is from. We have historical things that we actually show him, and we have got people who actually talk to him what where you are and what is the significance of this place. You are just so we touch his pranamaya kosh, and plus we make him do yoga. So pranamaya kosh, and then the next is we touch his manomaya kosh. Manomaya kosh, how? We tell him to be in a room and for 2 to 3 hours, and we just enumerate the people that you have hurt throughout your life. If there are 10 people, suppose, enumerate their numbers. People who have died, say sorry to them. Look at the cosmos and say sorry to them. And people who are still living, take their numbers and call them and say sorry to them. Trust me, not more than 2 to 3 numbers, and for 24 hours their tears don't stop. I would suggest, highly suggest people to actually do it and see. It would heal you actually. So we touch the manomaya kosh that way, and then we touch the विज्ञानमय कोश. विज्ञान हिंदी संस्कृत का कोई पर्याय नहीं है इंग्लिश में. विज्ञान is not science. विज्ञान is विशेष ज्ञान. You take ज्ञान from the 5 senses and उस ज्ञान का मंथन आप अंदर में करते हैं, और वो जो विशेष ज्ञान आपको प्राप्त होता है कि ये चीज ऐसे करना, that is विज्ञान. So Vijnanmaya Kosh we touch, and then we touch the Anandamaya Kosh, wherein we are cleansing the pineal gland, and we are actually documenting it also. That the calcification of the pineal gland was, say, in a scale of 0 to 15, it was 13 out of 15. Slowly we see that it is receding, and trust me, as it is receding, cancer is also receding. So that is the best part, and that is the way forward as far as I see it. And if there are, can I have the next slide, sir? Yes, so our job is slightly very difficult actually. Cancer is a chronic progressive disease, and it progresses very fast. If any pathy
or any way of curing cancer can stop the progress of cancer, that is a miracle. If that cancer takes a U-turn, that's a miracle in a miracle in a miracle. And after the U-turn, if the cancer is over, that is total miracle. I mean, that is out of the world. That is not, they will say it's not possible. So you'll be happy to note that we have an 11th patient that we did around 4 days back. We got the result with a PET CT that his cancer is over. So that was some little achievement. We feel very great about it if we can help these patients anyway, because these patients come to us at a stage when they are told that nothing can be done, you take him home. If from that stage a cancer can be cured, it is a big thing that can happen. But in many patients, we are able to stop the progress of cancer, and we are very happy with the results that we are getting. And if there are, next slide, sir. So the cancer markers, yes, the talk would not be complete without the cancer markers. The cancer markers, alpha fetoprotein. Now, in an elderly person, if you are getting fetal proteins, which means the cancer cell is regressing to its primordial form. This is the behavior of the cancer cell. What happens is, if they coalesce and form something, they are an enemy to the body at that point in time. They are in fight with the body, they are in fight with the immune system. Sometimes the immune system is able to kill some of them. So what happens is, they start regressing to the point wherein they come to that primordial cell level. And that is how the tumor markers, you get fetal proteins there. Next slide, please. So this is what the talk was all about, sir. And if there are any or many questions, I'll be very glad to answer all the questions. And I would hand it over to my co-panelist. Now I would like to welcome, thank you अवधेश जी. आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, और आपको देख के एक इंस्पिरेशन मुझे लगा. एक मेरे पास केस है, मैं केस हिस्ट्री थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा. वो आदमी 2 महीने में मरने वाला है, और 3 महीने पहले जानता भी नहीं था कि उसको ऐसा है. तो आज 5 महीना उसकी जिंदगी है इस कैंसर की वजह से. मैं आप लोगों से गाइडेंस चाहूंगा. मैं आदरणीय सुनील आर्य जी को स्वागत करता हूं. स्वागतम सुनील जी, स्वागत. थैंक यू. डॉक्टर अवधेश पांडे जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की. मैं हिंदी में बोलूंगा, क्षमा करें. बहुत सुंदर व्याख्या की डॉक्टर अवधेश पांडे जी ने. और मैं सोच रहा था कि जो हम आयुर्वेद के माध्यम से कहना चाहते हैं, कह सकते थे, वो सब तो आपने कह दिया. फिर भी मैं इसको कुछ इस तरह से समझता हूं कि हर व्यक्ति के शरीर में, या कहिए हर कोशिका में, हर सेल में कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाने की क्षमता रहती है. लेकिन फिर भी एक स्वस्थ शरीर में वो सेल, वो कोशिका, वो जो नॉर्मल सेल है, वो कोशिका कैंसर कोशिका में कन्वर्ट नहीं होती. क्यों? क्योंकि एक प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, एक ऑटो कैपिंग वहां लगी रहती है. अब उस ऑटो कैपिंग को किस तरह से वो डिस्ट्रॉय होती है और कोई भी सामान्य कोशिका कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ये समझने का विषय है. हमारे आयुर्वेद में हम कहते हैं सर्वेषां रोगाणां कारणं अग्नि माध्यम. माने बीमारी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, सबके पीछे एक ही कारण है, वो है अग्नि का मंद होना. अबे अग्नि क्या है?
अग्नि को मोटा मोटा हम समझते हैं मेटाबॉलिज्म मान लिया, माने जो कुछ बाहर से खाते हैं वो हमारे जीवित शरीर का हिस्सा नहीं होता, लेकिन भीतर जाने के बाद वो हमारे शरीर का हिस्सा हो जाता है। माने आप समझिए, आज के वैज्ञानिक युग में हम सब जानते हैं कि कौन सी चीज अंदर जाने के बाद कैसे कैसे परिवर्तित होती है। माने आप आयरन पिल खाते हैं, भीतर जाकर के वो बन जाता है और खून बन जाता है। कैल्शियम पिल खाते हैं या सप्लीमेंट्स खाते हैं, हड्डियों का विकास हो जाता है। प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं तो मांस हमारा बढ़ता है। लेकिन क्या हम इन सब चीजों से, ये सब चीजें माने आयरन पिल से खून बाहर बना सकते हैं, कैल्शियम पिल से हड्डी बाहर बना सकते हैं, जबकि विज्ञान को सब मालूम है कैसे कैसे परिवर्तन होता है, फिर भी नहीं बना सकते। भीतर कैसी फैक्ट्री लगी है जो खाते तो निर्जीव है और बन जाता है जीवित शरीर का हिस्सा। और ये सबसे इग्नोर्ड पार्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है आयुर्वेद में, दैट इज अग्नि। ये अग्नि ही वो ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स है जो बाहर से भीतर को जाने वाली हर चीज को ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब आयुर्वेद में जब कहा गया है कि सभी रोगों में कारण अग्निमंद होना है, इसका मतलब जब अंदर की अग्नि, भीतर 13 प्रकार की अग्नियां हैं, वो उसका विषय नहीं है चर्चा करने का। जब अग्निमंद होती है तो एक खास तरह का एक मेटाबॉलिक टॉक्सिन डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं आम। जब वो आम बॉडी में पैदा होता है, वो आम टॉक्सिक मटेरियल होता है, वो जहां जहां जाता है वो उस आम अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपने दोषों के संगठना के हिसाब से वो उस तरह के रोग पैदा करता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, कोई और समस्या हो, कुछ भी हो। तो यदि जब हम कैंसर की बात करते हैं, हम आयुर्वेद वाले लोग बात करते हैं और ये दावा करते हैं कि हम कैंसर में क्योर होगा कि नहीं, नोबडी नोज। लेकिन कैंसर की किसी भी स्थिति में हम कुछ राहत दे सकते हैं, उसके पीछे हम उन तीनों चीजों को प्रयोग नहीं करते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब ने बताया कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। उन तीनों के अलावा हम करने की कोशिश क्या करते हैं, हम किसी न किसी तरह से उस टॉक्सिसिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले हम अग्नि का संवर्धन करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, वही सारी बातें हैं। हम अपने मेटाबॉलिक फायर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं जिससे आम की उत्पत्ति कम हो, टॉक्सिक मटेरियल कम हो। दूसरी बात क्या है, कैंसर के मामले में यदि जैसे उसको हमने कहा अर्बुद होता है जो कि कार्सिनोजेनिक नहीं होता, मलिग्नेंट नहीं होता। दूसरा है, कुछ और भी कहा गया है आयुर्वेद में, जिसको हम जो कभी भी ना भरने वाला व्रण वुंड जो होते हैं, वो उनको आप मैलिग्नेंसी से थोड़ा थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। उन दोनों में ही जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल है उनको डिटॉक्सिफाई करें शरीर से। तो अगर हम ये सोचें, आम जो है वो कफ की संज्ञा वाला है, कफ जैसी पदार्थ है, तो यदि कोई ट्यूमर या ग्रोथ या अर्बुद या ग्रंथि बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसमें वात पित्त कफ तीनों इन्वॉल्व होते हैं, वो मैलिग्नेंसी की तरफ चला जाता है। लेकिन यदि कोई ट्यूमर मैलिग्नेंट नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहा, तो सामान्य रूप से समझा जाता है कि उसमें कफ की समृद्धि होती है, कफ के बढ़ने से वो बढ़ता है। तो किसी भी तरह का ग्रोथ बॉडी में यदि होता है तो उसमें जो सबसे बड़ा दोष है, जो 3 बायोफोर्सेस हैं, वात पित्त कफ उसमें ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। तो हम जब डिटॉक्सिफाई करते हैं तो 2 तरह के टॉक्सिन्स ही बॉडी से निकाले जाते हैं, कफ और पित्त। माने कफ को हम निकालेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे बॉडी को, तो उससे रिग्रेशन होगा। जो बढ़ोतरी है, जो वृद्धि है, उसको घटाने का काम कफ को डिटॉक्सिफाई करना है। इसी तरह से बहुत प्रोलिफरेशन हो रहा है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, उसमें कई तरह के चैनल्स बन रहे हैं और ब्लड वेस्कुलेशन उसमें हो रहा है, तो वहां पित्त का रोल रहता है। उसमें हम विरेचन के माध्यम से, जैसे पहले मैंने कहा डिटॉक्सिफाई कफ के माध्यम से करते हैं, माने वमन करते हैं, और दूसरे माध्यम में हम विरेचन करते हैं, तो जो पित्त दोष है वो उसका संतुलन हो जाता है। इस तरह से कफ और पित्त दोनों दोषों को हम डिटॉक्सिफाई करके शरीर को काफी राहत देते हैं। आपने जैसे कहा डॉक्टर साहब ने कि कट कर दिया, उसको किल कर दिया, उसको जला दिया, उन तीनों के अलावा हमारा जो काम है अग्नि को संवर्धित करके, आम को जला करके और आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके वो काम होता है। कितना ठीक होगा वो कोई तय नहीं कर सकता, वो शरीर पर मुंडे मुंडे मतिर बनना शरीर के हिसाब से तय होता है। लेकिन ये तय है
कि आयुर्वेद के माध्यम से हम अपना डाइट मैनेजमेंट करके, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके, शरीर को डिटॉक्सिफाई करके हम कुछ बेहतर प्रोस्पेक्टिव्स कैंसर चिकित्सा में कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा इतना ही कहना था। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सुनील जी, बहुत संक्षिप्त में और बहुत आपने सारगर्भित बातें कही। ये मार्ग निर्देशन है। मदन सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मदन सर फॉर हिज कमेंट्स। एंड मदन सर के बाद रिक्वेस्ट करूंगा मदन सर से कि क्वेश्चन आंसर सेशन में पहले मुझे बुलाएं। मेरा भी एक क्वेश्चन है सर, एक आदमी की जिंदगी का सवाल है और दो एक्सपर्ट बैठे हैं तो मुझे गाइडेंस मिलेगी। आई रिक्वेस्ट मदन सर प्लीज। पवन जी प्रणाम, अवधेश जी प्रणाम, सुनील जी प्रणाम जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। एज जैसे अवधेश जी के टॉक चलते रहते थे, आई वाज पुटिंग सम कमेंट्स इन द चैट बॉक्स, जस्ट एडिंग टू जो कुछ पॉइंट्स जो अवधेश जी ने उठाया। और लास्ट रेफरेंस आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इन द चैट बॉक्स, ये है ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला बात जो आपने बताया जी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सुनील जी ने जो बताया आम की बात, आम कैसे बनती है और उसके अलग अलग लेवल पे होती है। जैसे अवधेश जी ने जो बताया पंचकोश की बात, सो इफ वी अप्लाई द श्रोत कॉन्सेप्ट टू पंचकोश ऑल्सो, कि हर एक कोश के अगले कोश की तरफ देयर इज अ कनेक्शन, वी कांट सी इट, it is in the avyakt domain, not in the avyakt, it is beyond our it's in the sukshma domain. There is a connection between one kosha to the next kosha, and the kosha beyond the first kosha, anamaya kosha, is all in the subtle domain. So this is a very important point, and how to understand that, can we measure it? Pura science jo chal raha hai on the basis of measurement, can we measure these things? So that is at the exterior. Internally har ek cell ke andar jo cheez hai, mitochondria ki baat jo aapne uthaya ji, is a very very important area. I will put one reference here. Hamari yahan pe ye Czech Republic mein ek hai Jerry Pokorny, उनके एक किताब है, इनकी काफी कुछ है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर. I'll put the reference here. I'm in discussion with Jerry, discussing many of these aspects, biophysical aspects of coherence. So coherence is a very important word. जो आपने अवधेश जी जो आपने बताया, the coherence between the mind and the body, mind-body coherence. If there is incoherence, then the system is likely to fall apart, and that falling apart leads to complications, whether it is chronic disease, whether it's metabolic problems, whether it is whatever we talk about, there is a complication. So I want to first of all thank Avadhesh ji for his wonderful presentation. Avadhesh ji has shared with me many whole body scans on cancer patients. So all that information is with me. He has shared all those details, and it is very impressive to see some of those cures that we see. And many of the details are available, and they have to be refined. And I'm talking about this refinement because even one case is the indication of some biology that is happening. There is biology happening, iske matlab there is some biochemistry happening, iske matlab kuch chemistry chal raha hai, iske matlab kuch physics bhi hai iske piche, iske matlab it is possible to understand those processes. So that is the first important thing. And there is a lot of work going on and discussions, jaise humne bataya, hamari Central Council for Ayurveda Research, and the discussion with the National Cancer Institute in NIH, National Cancer Institute in Bethesda. Those discussions are going on. We must come together a little more collectively to bring this narrative. Thoda aur agar saath saath kaam kare, we will get a little more coherence.
जैसे सुनील जी ने बताया कि इलाज के लिए वात पित्त कफ सोच लगाएं, then we can make this truly unique way to understand the human body in health and physiology. Harishji will tell us, Harishji Toronto mein hai, Harishji will tell us a little bit of how to take the Tridosh concept down to the level of individual, down to level of treatment, down to refining treatment. Jo Avdesh ji jo bataya or Sunil ji what he has said is pointing in that direction, and I think we need to systematize that approach thoda aur. अब हमारे साथ काफी हिंदुस्तान सुनील जी काफी काम चल रहा है कैंसर के ऊपर. पुणे के नजदीक है वाघोली और वहाँ पे कैंसर इंटीग्रेटेड कैंसर रिसर्च सेंटर सरदेशमुख जी है वहाँ, और उनके पास है कुछ 15,000 आसपास 15,000 के आसपास कैंसर treatments and cases and reports, and they will all come into the dialogue. There is a very senior oncologist there, unke saath Arvind Kulkarni ji. He was also managed the Integrative Cancer Center in Philadelphia. So there are many people. The dialogue is happening, but I'm hoping that we can come together as one group. And so today's presentations by Avdesh ji and Sunil ji are very, very important for this. Last point I want to make before I pass the floor to Pavan ji for his first comment is that Punjab is a very unfortunate part of the country. The very, very high incidence of cancers, particularly in the northern districts of Bathinda and those areas. It gives us that unfortunate situation needs to be addressed, but not in an exploitative way. It gives us an opportunity to help the people, and I hope that Avdesh ji being in Chandigarh and doing this work will give us an opportunity to somehow turn that disadvantage into something that will benefit people and also help understand this very mysterious whole body problem a little more clearly. So shall we listen to Avdesh ji, Sunil ji, thank you again from all of us here. Bahut bahut dhanyawad. Aapne bilkul, you have taken us to the heart of the problem. You have given us something for all our viewers to address, and it is making us think as we go along. We will listen to Pavan ji about a request Pavan ji ke saath jo case jo aaya. Pavan ji, all yours. Fir aayenge ji discussion ke liye thoda. Yes sir, yes sir. Nandi, I would like to request to discuss on this case also, sir. Bilkul ji. Because this case is excellent accountant. My wife's friend's husband, intimate friend's husband, before 3 months, he observed me, sorry, before 1.5 years, he observed the infection in penile area. He went to neuropathy surgeon and they started treatment for 1.5 years. Just before 3 months, he entered to Apollo, where he informed that he is having penile cancer. So he has to be admitted immediately. He admitted. Penis was just like Avdesh ji told, that was cut completely. After that, the infection is spread up in whole the body. Now the condition is there. Then they admitted the patient into Tata. One chemotherapy dose, only one chemotherapy dose, he could not resist, and continuous rectal bleeding is till date. He can't eat any solid food. Tata Memorial has given reply that he will be alive for only 2 months. Only 2 months. He has spent approximately 8 to 10 lakhs in these 3 months. And now without money, he is waiting for death with anal bleeding at home. What our Ayurveda can do, what holistic care can do for his peaceful death, and it is the hope or
expectation of the family that he will be survived, and suppose prolonged life is there, that will be also. The first cycle of chemotherapy could not be completed. After 2 days of chemo medication, there is severe bleeding from anus. Now he can't have any kind of solid food, because when he eats solid food, blood comes out instead of the stool. Fresh blood comes out. He feels hungry, but he cannot have solid food due to bleeding. That means the modern medicines have left the patient to die. No option, no other option. So if any organization is there, if any expert is there who can help in this condition, I will be grateful to listen about this, to discuss. Every report is with us. What can we do? Penis is cut, cancer is spreaded, because now he can't sit. His legs are atrophy. Whole down leg is edema, and whole upper legs are atrophy. So he can't sit, he can't walk. Young person of 36, 37 years. Please guide me. I will be grateful. Sir. It's like this, sir. I would take this question. The first and foremost is, please share his latest PET CT reports with me. Let me see what is the staging and what is the situation. And just after chemotherapy, what was the chemotherapeutic drug that was given? Because if there is bleeding, there has to be a gastrointestinal reaction to the drug. So what was the drug is very important for me to take a decision. Nonetheless, in any kind of anal bleeding due to cancer, the marigold flower, marigold, गेंदे का फूल, वो बहुत काम करता है. उसको पीस के चटनी बना के उनको चीजें मतलब धनिया पत्ती पुदीना के साथ चटनी बना के तो दे ही दे, bleeding might stop, and it actually is very effective. But I usually don't give any medications unless I see the patient. So it will be very great if I can see the patient on a video call. You can pass my number to them, and they can give me a video call, and we will see the patient, and then we'll give a full prescription as to what needs to be done. If required, tell him that all is not lost. We have a 24/7, 365 team working with me. And what we do is, if we have to manage a patient, we take up that patient, and there is somebody who is monitoring the patient. So don't worry, all is not lost. We are still there, and we will be able to help you. Help him. Thank you. We have sent you the documents, and whatever the other documents are required, I will definitely communicate you, and I will communicate your phone number to the patient also. But please save a life or prolong the life, and we will give him peaceful death. We will try to do our best, sir. I can assure you that. Thank you. Madan sir, now. Pawan ji, thank you. Yours, sir. आपने जो बताया जी, you have given us a case. It is a very unfortunate thing, and there are many cases like this. हिंदुस्तान में जहाँ भी देखो, जहाँ पे cancer, regional cancer centers जहाँ भी है, there are many cases like this. रोज people who are turned away because the contemporary treatment is not able to provide any more help. And there are some discussions going on now with some colleagues in Kerala that we should offer a resource center where these people who are turned away can come and get some guidance. Yesterday, AVADHESH kal hamare saath hai autism ke upar discussions. This is another situation where we find a similar helplessness in modern medical care. They are not able to offer anything, and there is no other place where the affected families can go for help. Jo Pavanji has offered it for
for cancer. This is happening in many other conditions. So I just feel because of the large numbers in India, we have about almost 1.5 billion people, 1,500 million people. There will be many, 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 many individuals. And it's an opportunity for us collectively to think about this as a possibility. So I want to bring the discussion back to our points of discussion today on cancer. AVADHESH, the floor is yours. If you have something based on something that we have touched on till now, please do. सुनील जी, आपसे भी लें जी सोच, अगर आपकी तरफ से कुछ हो, आज अभी तक जो बातचीत हुआ उसके ऊपर कुछ हो, प्लीज शेयर. फिर उसके बाद we have many people here, हमारे साथ काफी लोग हैं जी, उनसे भी लेंगे थोड़ा, उनसे भी. पवन जी, what at the outset I should tell you, ये जितने भी आपके पास कैंसर पेशेंट्स हैं, we would love to give an opinion to many of them, and trust me, the way we are going, in fact, somebody has to come to see to believe. They have to come to the hospital to see at any point in, like for example, just now we have got 35 patients who are cancer patients, terminally ill patients who are admitted with us. And they are, all of them don't do very well, but many of them do very well too. So this needs to be emphasized. What happens is people start feeling all is lost. So there is a respite, and we are trying to do our best. Yes, we are little choosy in taking cancer patients, little choosy. Why? Because most of the times we get patients who's all multi-organ failure. Now, multi-organ failure, since we don't have a superior CCU setup, it becomes very difficult to handle these patients. But short of a multi-organ failure, if the patient is breathing well, talking well, and we can take up those patients, and we can ensure you that they will feel better than what they are feeling right now. That is the first thing. The second is, many times we keep the patient in their homes, and our 24/7, the monitoring team monitors them. So that becomes very convenient for the patient also. So that is what we are doing, sir. Thank you, AVADHESH ji. We will come back to you. Please stay with us. सुनील जी, आपकी तरफ से अगर कुछ हो जी इसके बारे में. सुनील जी, हमारे एक सवाल है जी, आपके गुड़गांव में या हरियाणा में अगर देखो तो उसके बारे में अगर आपके पास कुछ हो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए थोड़ा सा, कि कैंसर की क्या है उस तरफ. हरियाणा इन पर्टिकुलर, पंजाब की तो बात तो हमें पता क्या चल रहा पंजाब में, काफी गंभीर. हरियाणा के बारे में थोड़ा बताना जी. और डेटा तो मेरे पास कोई नहीं है अवेलेबल, लेकिन ये जरूर है कि पंजाब हो या हरियाणा हो, दोनों का बेल्ट लगभग एक जैसा ही है. अच्छा. उसी तरह का खाना, जो पेस्टिसाइड्स और खूब सारे खाद, वो सब चीजें हम खाते ही हैं. खूब केमिकल एक्सपोजर हमारा है ही हमारे भोजन का. तो आप देखें तो पिछले 10 वर्षों में या 15 वर्षों में कैंसर के पेशेंट्स बहुत बढ़े हैं. बिल्कुल जी. और वो जिस लेवल पर आकर के वो खुलते हैं, एक्सपोज होते हैं, उस समय तक वो बहुत कुछ करने की संभावना रहती नहीं है. और उससे बड़ी बात भी क्या है, जैसे डॉक्टर देश ने कहा कि वो पेशेंट हम तक पहुंचते पहुंचते एग्जॉस्ट हो चुका होता है. हमारे पास केवल उस कंडीशन में वो आता है जब कहते हैं अब डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप टर्मिनली इल हैं और आपको कुछ हो सकता नहीं, तो अब कुछ आयुर्वेद में है क्या करने के लिए. तो उस समय कुछ भी क्लेम करना, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, हम ये तो नहीं कहते कि हम उनकी जान बचा पाते हैं या कोई बहुत ज्यादा कोई मेजर बदलाव ला पाते हैं, पर ये हम जरूर कहते हैं कि उनका समय कुछ उनको जरूर अच्छा मिल जाता है लास्ट का आते आते. हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम ये देखते हैं कि उसकी समस्या में, उसके कैंसर के रोग में किस किस तरह के लक्षण उपलब्ध हो रहे हैं. उन लक्षणों में वात पित्त कफ में से क्या बहुत बढ़ा हुआ है. सिंपली उसके लिए ही हम सिंपल मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं.
उससे बदलाव क्या होता है कि उसका जो बहुत पेनफुल कंडीशंस होती हैं उसमें कुछ राहत जरूर मिलती है बढ़िया। और इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत पेनफुल कंडीशंस ही है तो उसमें कहीं ना कहीं वायु का प्रकोप रहता है, तो हम सिंपल उसकी बस्ती चिकित्सा करने का प्रयास करते हैं, स्नेहन करने का प्रयास करते हैं, तो उसको राहत मिलती है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग या बहुत बर्निंग या बहुत ज्यादा इस तरह का इरिटेशनल प्रॉब्लम होता है, तो हम उसका वहां पर बस्ती के माध्यम से ही हल्का विरेचन करने की प्रयास करते हैं, कुछ कूलेंट्स देने की कोशिश करते हैं। तो उस लेवल पर तो हम ये नहीं दावा कर सकते कि हम उसको ठीक कर रहे हैं या कुछ क्योर कर रहे हैं, लेकिन जरूर हम कुछ सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से ही हमारा मैनेजमेंट रहता है। तो जिस लेवल पर हमारे पास पेशेंट पहुंचता है, या तो पहुंचेगा तब जब वो एक बार उसको सर्वाइव हो गया, अब उसकी चिंता रहती है रिकरेंस ना हो। तो रिकरेंस के लिए कुछ है कि आपके पास, वहां पर हमारे पास करने की गुंजाइश रहती है कि हम वहां उसकी अग्नि पर काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करते हैं, वमन विरेचन से शुरू करते हैं। निश्चित रूप से वमन विरेचन करके बस्ती का काम करते हैं। उसमें कुछ चीजें हमारे यहाँ ऐसी होती हैं जो जो रक्त शोधक की श्रेणी में आती है, जैसे गिलोय है, मंजिष्ठा है, सारिवा है, तुलसी है, इस तरह की, जैसे वासा है। कहीं अभी किसी ने लिखा भी है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कहीं से भी हो तो खास तौर से अधोग रक्तपित्त के लिए वासा उपयोगी माना गया है। माने अगर लोअर ट्रैक से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो किसी भी माध्यम से, तो उसमें वासा काफी उपयोगी है। कहलवा पिष्टी भी किसी तरह की ब्लीडिंग में उपयोगी है। इस तरह से हम डेफिनेटली प्रयास करते हैं। वो प्रयास कितने इफेक्टिव होते हैं वो एक पूरा एनालिसिस का विषय है, पर अभी तक हम ये दावा करने की स्थिति में नहीं है। इसमें बहुत सारा काम अभी हो रहा है, होना बाकी है। डॉक्टर अवधेश जी के साथ इसीलिए एसोसिएशन भी हमारा है, शायद कुछ अच्छा हो जाए। चलो अवधेश जी, आपकी तरफ से थोड़ा बताना जी, आप तो मॉडर्न मेडिसिन के आदमी हो। ये जो टर्मिनोलॉजी जो सुनील जी जो यूज करते हैं, यू आर स्पेशल क्योंकि यू आर पुटिंग योर एफर्ट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब आपके कंटेम्पररीज उनमें क्यों नहीं आते जी दिस काइंड ऑफ, वो डू यू नो व्हाट आई मीन, कि क्यों कमी कहाँ है उनमें, कि आप तो निकल आया इस तरफ और यू आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज है ये वात पित्त कफ, और यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल विद पंचकोश थियरी एंड यू आर सीइंग सम बेनिफिट्स। मगर आपके जो कंटेम्पररीज है उनमें, आई एम गोइंग टू यूज दैट बैड वर्ड, तकलीफ क्या है चीज में, व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? आई एम आस्क वेरी अनडिप्लोमैटिक, खुला खुला बता दीजिए जी, कोई प्रॉब्लम। यू आर इन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हियर, एवरीबडी लिसनिंग आर आल्सो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, दे कैन नॉट get rid of you from the medical register, so please share whatever you want to say. खुला खुला, क्योंकि this खुला खुला मतलब this is to be, समझ गया मैं। हाँ जी। तो आपने जो प्रश्न पूछा है वो अब मुझे याद आ रहा है, महाभारत में एक प्रसंग जो युधिष्ठिर से पूछा गया था। इंसान का सबसे बड़ी विडंबना है कि उनको ये लगता है कि वो अमर है, बाकी सब मर रहे हैं, मैं तो अमर हूं। प्रॉब्लम ये है कि वो एक बार भी नहीं समझते कि कल को अगर उनको हो गया तब क्या करेंगे। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, आप उसको सिर्फ इसलिए नहीं मतलब उठा रहे हैं कि somebody might get angry or you might lose a job, ये स्थितियां कई बार होती हैं लोगों की। तो somehow मेरे को लगता है कि एक कंसेंसस इसलिए बनाना है कि जब तक मॉडर्न मेडिसिन ये समझती रहेगी कि आयुर्वेद स्यूडो साइंस है, तब तक, और आयुर्वेद के लोग समझते रहे कि तुमने, अब मुझे सिर्फ मतलब लॉगर हेड्स पे नहीं रहना चाहिए। वी ऑल नीड टू कम टुगेदर, एक ऑनेस्ट प्रयास जरूर करना चाहिए, बिकॉज मैन काइंड इज इन डेंजर। ये कोरोना से बहुत क्लियर हो गया दैट मैन काइंड इज इन डेंजर। ये एक ऐसी बीमारी से लोग मर रहे हैं जिसको पता चल गया, जिसको नहीं पता चला उसको तो सर्दी जुकाम हुआ, जिसको पता चल गया कोरोना हो गया और वो मर गया। मतलब आप देखिए, just because you knew that it is corona, people died because of that stress level, because whenever there is stress the immune system is shut down completely. I mean any small infection can kill you, even wearing mask. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि somehow हमें एनालाइज करना पड़ेगा rather than looking westward,
कि नहीं वेस्ट से जब जैम कॉल कार्डियोलॉजी में आएगा तभी हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे, वैसे उसके पहले हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये मानसिकता, गुलामी वाली मानसिकता, इधर और you are very busy, you are selfish, you are very busy in your own life and you feel that I am not bothered. ठीक है, let them do it. मैं अपने में मैं बहुत busy हूँ and commercially I am doing well. So all these things, till when? What next? What is the roadmap? Okay, you'll earn some more money. Okay, what next? You'll earn some more money. What next? You'll earn some more money. See, this cannot go on and on. There has to be something else that has to fire your passion. डॉक्टर साहब, इसमें पॉलिसी की तरफ से कुछ है? I just raised this question just so that हरीश जी से भी सुनना, because हरीश जी has some similar sentiments about this matter. But ये पॉलिसी की तरफ थोड़ा बताओ जी, आपके मन में कुछ है? You have been thinking about this. Is there a way to bring a change in this, जो आपने जो बताया, by some policy change for education, policy change for delivery of healthcare, और कुछ हो सकता है कि नहीं? Problem क्या है सर? Since it is legally validated, modern medicine is legally validated. Now, that does not give you a license to have hubris. The hubris of this, only I know, and I should have the privilege of knowing, nobody else should talk about it, becomes a big problem. Now, even within modern medicine, you will see that if suppose neurologists are discussing something, so they might not be able to tell me, but if in my place, if there is some other radiologist, they will say, see, it's not your field, don't interfere. So, that way, the reductionist, ये खंडित सोच हमें कहाँ ले आई है, पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। हमें होलसम सोचना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम से हम चले थे, हम पहुंच कहाँ गए इस खंडित सोच में। अब तो हम सेल की भी बात नहीं करते हैं, अब तो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में भी अब वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसेप्टर्स ओनली। उसमें वो जो वाई वाला जो ये है, जो एंटीबॉडी है, वो जो वाई शेपेड है, उसका वाई वाले की बात कर रहे हैं कि इसमें ये बस, दैट्स इट, वी हैव फॉरगॉटन अबाउट द सेल आल्सो। दैट इज द काइंड ऑफ रिडक्शनिस्ट अप्रोच दैट वी हैव कम टू। ये पता नहीं कितने दिन चलना है, आई डू नॉट नो, बट एक चीज सोचनी चाहिए, दैट कोई एक पद्धति विथ कंजर्वेटिव मीन्स, हमने 5,500 साल बोला, मैं जानता हूं ये लाखों साल पुराना है, लेकिन फिर भी हमने, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश हु एक्चुअली डेटेड इट, एंड वी हिस्ट्री में हमें ब्रिटिश वाइज देखना पड़ता है, अपना मतलब हिस्ट्री जानने के लिए और उसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड की तरफ देखना पड़ता है। दुख की बात है, कह रहे नहीं में, उससे भी 5,500 साल से जो सिस्टम चल रहा है, आज भी चल रहा है। आप 200 साल से आए हो, कम से कम कुछ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है कि इतने साल से अगर ये रिडंडेंट होता या अपने आप को सेल्फ एस्टैब्लिश नहीं कर पाता, तो अब तक ये खत्म हो गया होता जैसे सिविलाइजेशंस खत्म हो गए। बिल्कुल जी। अगर ये अभी तक चल रहा है, दैट मीन्स इट हैज नॉट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, बिल्कुल जी। which means we need to actually integrate it in our knowledge system so that we can proceed for. And why are we here? We are here to help a person who has got gloom on his face to put a smile on his face. Can we do that? If we can do that, well and good. If we can't do that, then everybody is rich at his own place. I'm happy at my place, you are happy at your place, everybody else is happy at their place. So this is where the passion should be driven. I mean, the driver should be the passion, which unfortunately is at this point in time little lacking, but I am slowly seeing a little change in the horizon. I am seeing a change. Let's see.
Dr. Saab, before we listen to Rajan ji, we will get some thoughts from Harishji in Toronto. Harishji, namaskar ji. आपसे सुने जी, आप you have listened to everything अवधेश जी की तरफ से, काफी कुछ strong statements. Some of it is resonating with your world view also. आपसे सुने, फिर राजन जी से सुने, और हमारे साथ है जी काफी कुछ, रेणु जी से भी सुने थोड़ी देर में. हाँ जी, हरीश जी अनम्यूट कर दीजिए जी, म्यूट चल रहा है जी. जी डॉक्टर अवधेश जी नमस्कार, और सभी आचार्यों को नमस्कार. बड़ा अच्छा लगा कि मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स जो हैं अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं आयुर्वेदा में. तो डॉक्टर अवधेश जी 2-3 पॉइंट शुरू करते हैं. आपने कहा कि इंटरेक्टिव बनाते हैं इसको, तो आपने एक वर्ड यूज किया शुरू में, कॉस्मोस एनर्जी. वो क्या है, थोड़ा और बताइए इसके बारे में. वो शायद आपने किया नहीं, कॉस्मिक एनर्जी. आप एक बार करिएगा जरूर, आप ये दोनों को मिला के. कॉस्मिक वो किया, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी का थोड़ी थ्योरी बताइए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है कॉस्मिक एनर्जी. नहीं, कॉस्मोस से आपको बहुत कुछ मिलता रहता है. एंड नहीं, योर प्लीज पुट योर, आई थिंक योर क्वेश्चन एक बार और जरा अटेम्प्ट करके कुछ ऐसा पूछे जो आंसर बोलो. जो आपने कॉस्मिक एनर्जी की बात की है, वो एनर्जी है क्या? नहीं, एवरीथिंग इज एनर्जी. एवरीथिंग इज एनर्जी. Cosmic energy be what you can see inside your body is the energy in the physical domain, and what you cannot see outside the body is metaphysical. Like for example, एक आपको श्रब दिखता है, मान लीजिए कोई पेड़ दिखता है, छोटा सा श्रब है, आप उसमें देखेंगे एक गोल्डन रेशियो होगा, वो आपके नाभि में भी है. That golden ratio is there. और वहां से एनर्जीज निकल रही हैं, और ये फिजिकल फॉर्म जो आपको दिख रहा है, इसके बियॉन्ड जो आप कॉस्मोस से कनेक्टेड हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड. दिस गोल्डन रेशियो इज गोइंग स्पाइरली अपवर्ड्स. सो एवरीथिंग इज लाइक दैट, एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. सो व्हाट यू कैन सी इन द फिजिकल डोमेन is the physical realm. That is also मतलब energy body है ये. And what you cannot see is the metaphysical. That is the cosmic form. तो अवधेश जी, आपने वात पित्त कफ को भी अंडरस्टैंड किया? जी 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 जी. थोड़ा बताएं. मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूँ. नहीं, let's come to the question, sir. आपकी वात पित्त कफ से क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप क्या समझते हैं वात पित्त कफ क्या होता है? नहीं, जैसे अगर if the acid burden is more, तो हम ये समझते हैं कि इसका पित्त मोर है. If there is वायु प्रॉब्लम, वो कफ का प्रॉब्लम उसको बोल सकते हैं. तो why do you ask? Please tell me. मैं ना जी आज थोड़ा सा मैं इसे एलेबोरेट करता हूँ, सो दैट आपका आयुर्वेदा में और डीप इंटरेस्ट हो जाए. हम लोग तो सारे इसको प्रैक्टिस करते हैं. आयुर्वेदा इज इन प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 5000 years. तो वो प्रैक्टिस कैसी है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं, जिससे आपका और इंटरेस्ट डीप हो जाए. यहां तक आपने कॉस्मिक एनर्जी की बात की है. टोटल आयुर्वेदा एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड है. तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, कॉस्मिक एनर्जी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. एक एनर्जी का नाम है वात, दूसरी का नाम है पित्त, और तीसरी का नाम है कफ. अगर आप इन एनर्जीज का सोर्स देखें, ये 5 महाभूत इनका सोर्स होता है. जब आकाश महाभूत और वायु महाभूत आपस में कोलाइड करते हैं, दे प्रोड्यूस एनर्जी विच इज कॉल्ड वात. इसकी एग्जांपल है हरिकेन. हरिकेन की सारी प्रॉपर्टीज जो है, वो जो हमारे शरीर में वात होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज वात की होती है. उसी तरह
जब जल महाभूत और अग्नि महाभूत आपस में कोलाइड करते हैं, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम पित्त कहते हैं। वही पित्त एनर्जी हमारी बॉडी में होती है, उसके वही गुण होते हैं जो स्टीम के गुण। अगर आप देखें, स्टीम जो है इज ए कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड फायर। इसी तरह जो कफ एनर्जी है, जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत के संयोग से जो एनर्जी बनती है उसे कफ कहते हैं। तो वो कफ एनर्जी जो होती है, उसकी एग्जांपल है कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, रेत और पानी, रेत सीमेंट और पानी को मिलाते हैं, उसमें एक एनर्जी पैदा होती है, वो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है। सो बेसिकली वात पित्त कफ बेसिकली ये तीनों कॉस्मोस एनर्जीज हैं, जिसको हमारे एंसेस्टर्स ने आगे कैटेगराइज किया कि उसमें कॉस्मोस एनर्जी में ये वात है, ये पित्त है और ये कफ है। यही तीनों एनर्जीज हमारी बॉडी में होती है। आगे उन्होंने इसके आगे फर्दर बॉडी में जाके इसकी 5 कैटेगराइज इसको और किया, जो इसकी सब टाइप्स है। तो ये सारा खेल एनर्जी का है, नंबर 1। दूसरा, आपने बात की मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए वात पित्त कफ का बेस्ट कॉन्सेप्ट है दुनिया में। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के कुछ लोग आयुर्वेदा में आए, आज से नहीं आ रहे, बहुत कई सेंचुरी से आते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर दीपक चोपड़ा इन वेस्ट। ये लोग क्या करते हैं कि कई बार इन आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट्स को अपना रूप देने की कोशिश करते हैं। और मैं बहुत सालों से वेस्ट में आ रहा हूँ। हम लोग तो आयुर्वेद को संभाल के बैठे हैं, अपने दिल के साथ लगा के बैठे। हम चाहते हैं कि मॉडर्न साइंस के लोग इसको पढ़ें, हमसे ज्ञान लें और इसको मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करें दुनिया में। क्योंकि आजकल जैसा आपने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन का जो सिस्टम है एक लीगल सिस्टम है, और आजकल पूरी दुनिया एविडेंस और एफिकेसी के ऊपर काम कर रही है। हमारी एक मेडिसिन, एक द्रव्य, एक थ्योरी, उसके ऊपर कैसे एविडेंस जनरेट हो सकते हैं, कैसे उसकी एफिकेसी के मॉडर्न पैरामीटर्स पे जज हो सकती है, ये आप लोगों ने करना है। हम लोगों के पास तो एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, ग्रंथ है, उसकी ट्रांसलेशन है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको ट्रांसलेट करते करते उसको मॉडर्न मेडिसिन में कुछ और ही शेप दे देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वेबिनार में एक साइंटिस्ट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इज कर्कुमिन आयुर्वेदिक? तो मेरे पास उसका आंसर नहीं था। अब कर्कुमिन हल्दी से शुरू होके एक मॉलिक्यूल तक पहुंच गया। अब उसको वो कहते हैं कि ये मेरा है, हम कहते हैं हल्दी का डिस्क्रिप्शन हमने दिया आपको, हमने बताया कि हल्दी को कैसे इस्तेमाल करना है। ये एक कंफ्यूजन था। तो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंटेग्रेट करें, मॉडर्न मेडिसिन के लोग और आयुर्वेदिक मेडिसिन के लोग बैठ करके इसको हम लोग अच्छी चीजें देखें। तो एनीवे, मैं थोड़ा लंबा खींच गया काम। हरीश, थैंक यू, क्योंकि यू हैव आपकी लास्ट पॉइंट दैट यू बिल्ड अप इन अ वेरी फर्म वे। अब I think Avdesh ji understands this difficulty कि कहीं और लेके जाना, वो that is the curcumin example you gave is a very good one. यहाँ पाइपर लॉन्गम की वो भी निकाल दिया, कहीं पेपर से पाइपरिन निकाल दिया, so many chemicals. अब अवधेश जी, डॉक्टर साहब, इसमें सवाल ये है कि this term Shakti, you are using these words. We have a concept, Dravya Shakti. Dravya Shakti can have so many different manifestations. And the point I think that Harishji is saying, I will also give a little bit of background context. हमारी बातचीत चल रहे थे पिछले हफ्ते की PGI चंडीगढ़ में क्या हो रहा, वहाँ उनके साथ can we develop some a way in which we can respect the Ayurvedic Siddhant, but use the best of what is there in modern medicine and modern biology, modern physiology, so that we get a true new growth which keeps the authenticity of the
principles of Ayurveda, whatever. The deepest concept is cosmic energy, energy that Harishji talked about. But at the same time, validate that using the best of modern biology, modern tools. And I know this is your purpose, your search, when we talk about the pituitary and the aspects of the pineal gland and the HPA axis and all these things. I know you are committed to this. And I think, aapki taraf se, please tell us if we can make this happen somewhere. Ki authenticity of Ayurveda, the deep principles, Tridosh Siddhant, Panchabhut Siddhant, or concepts of prana, which you are already recognizing. Can we make an interaction जिससे टोरंटो वाले भी आ जाएं हमारे साथ की यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क वाले भी आ जाएं हमारे साथ पीजीआई के साथ या आपके इंस्टीट्यूट के साथ कुछ उस टाइप का कुछ something along those. Yeah, thank you for that question, sir. I will only say that I wish you luck if you're going with PGI Chandigarh. I wish you luck. Why? Because to give a concept to somebody, your windows of taking that concept should be open. If the windows are closed, your concept might be very good. It just might not. It might prove. It might strike deaf ears. What I can suggest is, we are already there in Chandigarh, and we already have an ethical committee clearance now. So what we are doing is absolutely ethical, and it is cleared by the ethical committee of Government of India now. And we are in the process of starting a few courses also of integrated medical sciences. So it will be a good idea that we collaborate together and actually do work. And if a publication is required, we have that IIT Kanpur channel is still open, and we are actually doing it with IIT Kanpur. We are doing a few things with IIT Kanpur. So that the scientific channel is there, sir. I welcome you. I welcome you. Thank you. Sorry to interrupt. You said about IIT Kanpur. If we can point us in the research paper or some reference or something, then everybody can follow this one. Please continue, sir. Apologies for interrupting. Yeah. So what I felt was, instead of contacting big institutes where it just might not, or the concerned department might not take much interest, we are here to take absolute interest in whatever you are saying, sir. Sabash. You're most welcome, and all the people listening to this podcast, they are also most welcome. They are most welcome to come here, and we can take it up. Harishji, aapki taraf se, do you have something to add to this? Because there is an invitation ki karenge, jaise aapne bataya ki tatvi आयुर्वेद तत्व के अनुसार करेंगे काम, जो कुछ, और पूरा सोच जो कुछ है वो लेके चलेंगे। डॉक्टर अवधेश जी, हमें थोड़ा ये समझना है कि मॉडर्न मेडिसिन के जो रिसर्चर हैं, जो डॉक्टर्स हैं या रिसर्चर्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा अगर हम कोई चीज ऑफर करते हैं कि ये हमारा बेस्ट एंटी कैंसर ट्रीटमेंट है या बेस्ट एंटी कैंसर द्रव्य है, इस पे आप रिसर्च करें या आप इसको आगे लेके जाएं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा? उसमें ये है सर कि जैसे आपने बोला ना, हम तो थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं यहाँ पे। हम तो ये मानते हैं कि दवा से कभी कोई ठीक होता ही नहीं है। कभी भी नहीं। It has to be a long process of total change. Dawa might help in a few very limited number of cases. ज्यादातर मेटाबॉलिज्म ठीक करके बीमारियां ठीक हो जाती हैं with the koshas that I talked about. दवा की जरूरत बहुत कम पड़ती है। आप अगर आयुर्वेद में भी देखेंगे,
Ayurveda is a way of life. The medicine part of Ayurveda is a very small part. I mean, लेकिन unfortunately अभी focus medicines पे हो गया, and this reductionist way, आप अगर fresh medicine बनाते हैं, that's very effective. अगर आप बल्क में बना के if you are doing it for selling, हमने देखा है वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है, except for maybe placebo effect कुछ हो सकता है, जो कि होता है, placebo effect is an effect. तो वो संभव है अगर पेशेंट का रुझान है कि नहीं आयुर्वेदिक ड्रग से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो ठीक हो जाएगा. उसको लगता है कि नहीं ये एलोपैथिक ड्रग, ये डॉक्टर ड्रग देगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो वो ठीक हो जाएगा. So that is called a placebo effect, and then there is a nocebo effect. If he is against Ayurveda, आप दुनिया का बेस्ट दवा दे दो, वो ठीक नहीं होगा, because that negativity comes. मेरा क्वेश्चन सर ये है, हम जानना चाहते हैं कि एक मॉडर्न मेडिसिन का जो रिसर्चर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वो क्यों इंटरेस्ट लेगा आयुर्वेदा में, उससे फिर क्या होगा. अगर हमें ये पता लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन वालों का माइंड इस तरह का है, देन वी कैन थिंक on those points. हमें थोड़ा It is like बताइए this, sir. It is like आपका this, sir. इंटरेस्ट क्या रहेगा. It is like this. मैं फर्स्ट टाइम नहीं समझा था आपको, आपका क्वेश्चन अब मैं समझा हूँ. It's like this, sir. हम तो यहाँ पे इंटीग्रेट करके चल ही रहे हैं. We have got many Ayurvedic doctors, we have got naturopathy doctors, we have got homeopathy doctors, we have got modern medicine doctors, we have got this yoga BNYS, जो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज, वो भी डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं. We have got a battery of doctors working with us here and also at our call center. So we are already doing this. There are a few Ayurvedic colleges who are actually approaching us कि आप ये हॉस्पिटल हमारा टेक ओवर कर लीजिए और वो आप चले, बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस हियर. हमारा एक डेढ़ महीने के लिए बुक्ड है, मतलब एक डेढ़ महीने तक, उसके बाद से हम पेशेंट ले रहे हैं. आज वी डोंट हैव अ रूम हियर इन द हॉस्पिटल. सो वी दीज पीपल आर कॉन्टेक्टेड, और जितना हमें रोज 10 से 15 रोज हमें बड़े हाउसेस से आता है कि आप ये ले लो और हमारे यहाँ खोल लो ये एक हॉस्पिटल. सो वी आर डूइंग वेल सर. व्हाट आई फील इज we already have Ayurvedic people with us who will be catering to who will be looking after your interest. I mean, it will not be a breach of interest or it will not be a clash of interest. That is what I want to say. And secondly, हमारा इंटरेस्ट कोई भी चीज जो पेशेंट केयर के लिए हो, हमारा इंटरेस्ट है उसमें. Thank you. Avadhesh, thank you. इस बात के ऊपर we will return to this. I think it will give Harishji some time to think. राजन जी से सुने जी, फिर उसके बाद 1 मिनट और चाहिए. Harishji, you are adding now या राजन जी के बाद? 1 मिनट मुझे चाहिए. बिल्कुल. बोलिए हरीश जी, बोलिए ना. डॉक्टर अवधेश जी, मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम लोगों का इंटरेस्ट क्या है, फिर आपको और समझ आ जाएगा. पर्टिकुलरली मेरा इंटरेस्ट जो है, हम बहुत सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेदा को मॉडर्नाइज किया जाए. तो आयुर्वेदा को मॉडर्नाइज कैसे किया जाए, ये एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है. अगर हम अपनी मेडिसिन को, अपनी ड्रग्स को मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं, तो हम लोगों के पास तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है नहीं ना. BMS के कोर्स में उसको पढ़ाया जाता था, अब थोड़ा थोड़ा ऐड हुआ है, लेकिन पहले नहीं पढ़ाया जाता था. तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है रिसर्च के लिए, या रिसर्च की जो रिसर्च को रिकॉग्नाइज करने वाले लोग हैं, वो टेक्नोलॉजीज लेके बैठे हैं. हम लोगों के पास मटेरियल है, ड्रग्स है, ट्रीटमेंट है, नॉलेज है, ट्रैक रिकॉर्ड है, 5 साल का इतिहास है. हम कहते हैं कि ये हरिद्रा खंड है, ये ऐसे ऐसे काम करती है, और हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं.
वो मॉडर्न वाले लोग कहते हैं कि ठीक है, हरिद्रा खंड में हमें बताओ कि इसमें क्या एक्टिव मॉलिक्यूल है। वो धीरे धीरे हरिद्रा खंड से एक्टिव मॉलिक्यूल हरिद्रा पे आए, हरिद्रा के बाद कर्कुमिन पे गए, फाइनली कर्कुमिन बना के उसको एलोपैथिक फार्माकोपिया में उन्होंने ऐड कर लिया, एंड दे एनरिच्ड एन एलोपैथिक फार्माकोपिया। लेकिन हमारा इंटरेस्ट है, हम अपने आयुर्वेदिक फार्माकोपिया को एनरिच करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मॉडर्न साइंटिस्ट अपनी टेक्नोलॉजीज लेके आए, हमारे आयुर्वेदा में आए, हमारे सिस्टम के ऊपर रिसर्च करें और आयुर्वेदा में ही उसको रखें। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम? यस सर, एब्सोल्युटली पॉसिबल है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। लेकिन आपको लगता है वो कर्क्यूमिन कैप्सूल काम कर रहा है? ऑफ कोर्स सर, कर्क्यूमिन, माफ करिएगा, हल्दी काम करता है। कर्क्यूमिन इज रिडक्शनिस्ट अप्रोच ऑफ लुकिंग एट हल्दी। तो हल्दी अगर होल हो तो ज्यादा काम करेगा। कर्क्यूमिन हो सकता है थोड़ा बहुत काम करता हो, बट आई थिंक हल्दी उसमें ज्यादा काम करेगा, व्हाट आई फील इज। एंड जो अवधेश जी, अलग बात करेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अवधेश जी, क्या हम आयुर्वेदिक लिटरेचर को हम एनरिच करना चाहते हैं। अभी ऑफ लेट हमारे जो एक्टिव प्लांट्स थे, आयुर्वेदिक प्लांट्स, जिसमें अर्जुन, तुलसी, नीम वगैरह वगैरह, जो 50 आयुर्वेदिक प्लांट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोपैथिक फार्माकोपिया में डाल दिया। नो, व्हेन वी टॉक कि हमारा अर्जुना इफेक्टिव है, जैसे अर्जुना इज एलोपैथिक, इट इज अवेलेबल इन एलोपैथी फार्माकोपिया। तो वो मैं चाहता हूं कि वो एक ब्रिजिंग कैसे बने जिसमें एलोपैथिक साइंस और आयुर्वेदिक साइंस एक प्लेटफॉर्म पे आए और आयुर्वेदा को भी हम एनरिच करें साथ में। ये तो आपको फिर आयुष मंत्रालय के थ्रू आना पड़ेगा सर। एंड आई थिंक they are open to such ideas. मैं एक्चुअली मिल के आया था आयुष मंत्री से। they are open to such ideas and they will definitely help। अगर मुझसे कुछ ये जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, तो आप ये जरूर Thank you, बताइएगा। We will come back, Harishji, we will come back to this point. थोड़ा राजन जी से सुने। सुशीला जी थे हमारे साथ, निकल गया। दोमा जी will, after राजन जी we will hear। दोमा जी के मन में काफी कुछ होंगे। राजन जी। हाँ, यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि अवधेश जी को मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। तो उनका जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है वो रियली सैल्यूट उनको भी। और हरीश जी तो आयुर्वेद में मेरे ख्याल से 5 पीढ़ियों से इतने, मतलब क्या बोलते हैं कि घुस चुके हैं कि उनका जो सोच है वो भी उतना ही सही है। तो ये जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है ये सच में होना चाहिए। एक एलोपैथी और आयुर्वेद, इसके बारे में एक ही अब तक का रिसर्च जो हो गया उसके बारे में मैं थोड़ा कहूँगा, क्योंकि बस्ती के बारे में कि बस्ती को ऑथेंटिसिटी कैसी मिलनी चाहिए। तो करशन बस्ती के बारे में एक प्रोजेक्ट लिया गया था, एंड दैट वाज अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वालियाथन। ही वाज बेसिकली कार्डियक सर्जन। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट लिया था और उसमें करशन बस्ती में पेशेंट को करीबन 3 साल तक उसको फॉलो किया गया था। उसमें आयुर्वेदिक पैरामीटर्स क्या क्या यूज हो गए उसका भी रिकॉर्ड रखा गया। उसके बाद जो भी पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स है वो भी देखे गए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो इम्यूनोलॉजिकल पैरामीटर्स है उनका भी उसके साथ में स्टडी किया गया। और वो करशन बस्ती देने के बाद वो 3 साल तक वो पेशेंट का फॉलोअप रख करके वो मेरे ख्याल से पब्लिकेशन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी हो गया है करशन बस्ती के बारे में। तो वो एक बात है। दूसरी बात कि बॉम्बे में जो रुइया कॉलेज है मटुंगा में, तो वहाँ पे एक डॉक्टर साने थे, नाउ इज नो मोर। तो वो कोई भी ड्रग के बारे में एनालिटिकल स्टडी करके देते थे। हमारे पास के बहुत सारे डॉक्टर्स उनको अप्रोच होते थे और वो होने के बाद उनका जैसा जो भी स्टडीज
आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथिक पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो एनालिसिस करके देते थे। और उन्होंने उसके बारे में एक ऐसा पॉइंट निकाला था कि जो भी ड्रग्स कि जैसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, अगर वही तरीके से एकत्रित किए जाए तो दे आर मोर इफेक्टिव। और उसकी भावना की जो लाइनअप है वो भी देने से उसका इफेक्ट जो है वो और भी अच्छा हो जाता है। कैंसर के बारे में कहा जाए तो वाघोली मतलब पुणे से करीबन 20 किलोमीटर है, वहाँ पे इंटीग्रेटिव अप्रोच गए बहुत सालों से, मतलब आई थिंक सो मोर देन 25 ईयर्स। डॉक्टर सरदेशमुख और टाटा के जो भी सीनियर डॉक्टर्स है वो वहाँ पे उनका काम चालू है। और उनका कहना ऐसा है कि जैसा अभी आप अवधेश जी ने कहा कि उसमें मेडिसिन काम नहीं करती है, कि उसे अच्छा जो अप्रोच है पेशेंट की तरफ देखने का या उसको समझाने का वो ज़्यादा जरूर काम करता है। तो इसके लिए उनका भी कहना ऐसा है कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक नहीं होता है, पर जैसा एक जो अभी केस हरीश जी ने बताया, तो सॉरी हरीश जी ने, पवन जी ने, तो हिसाब से उनको की जो डेथ है वो उनका पीसफुल आयुर्वेद तरीके से कैसे हो सकता है उसके तरफ भी वो देखते हैं। और करीबन एक मोर देन 10,000 पेशेंट्स का डाटा उनके पास है। मेरे ख्याल से मदन जी ने उसके जो एक वेबसाइट और ये भी उसमें डाल दिया है। मैंने मेरे तरफ से उनके मोबाइल नंबर्स भी जो डाल दिया है, जो हमारे सदानंद सरदेशमुख सर है उनके। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है। सो थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ थोड़े कुछ पॉइंट शेयर करने के लिए मिले। तो अवधेश जी, आपका भी जो आमंत्रण है वो ध्यान में रख करके एक बार आपसे मिलने जरूर आएंगे। जरूर सर, जरूर जरूर। ओके, थैंक यू राजन जी, थैंक यू। राजन जी, थैंक यू। डोंट गो अवे येट, क्योंकि हमारे साथ है जी दोमा जी। दोमा जी से सुने। दोमा जी, नमस्कार जी। दोमा जी, सॉरी, वी वर हैविंग हरीश जी। सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। ये एक चीज से मुझे हंसी आया, हरीश जी जब पूछ रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्मिक एनर्जी। मुझे तो ऐसा लगा कि ये भारत से संस्कृति पाकर के आया या विदेशी से संस्कृति पाकर आया। यहाँ पर फॉर हिज रेफरेंस आई एम गिविंग that there was a discussion in DD1 on one occasion that the energy can be derived by cosmos, that is presented by Sharat Chandra Ghosh. Immediately that was being patentized by America. It was long back. I myself heard in DD1. What would have been the presentation of that patentization? Cosmic energy, how did it being referred in those terminologies? That is something different from medicinal terminology. But the verbiage is one and the same. And here, the entire system universe is filled with, is a play of one consciousness and operative principle. Do you accept it or not? शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, आनंद मूर्ति पहले सूत्र में ही दिया है, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? शिव और शक्ति दोनों का मिलित कैसा होता है? दोनों का, ये पेपर one side cannot be separated from another side. That is called Brahma. And here it is such, and at the same time, when energy के बारे में जो पूछ रहे हैं, हर चीज के बारे में analysis, for example, everything should be seen from the lens of the modern technology. If modern technology failed, the same thing I referred a few days before, that there was a research going on how creation has come out. At last, the particle which was the particle mainly for the energy, that particle is not being traced out. They themselves claimed that
It could not be traced out, but there is a particle. That particle might be God particle. They themselves claim. And at the same time, they themselves commented that if you say that God and all, you will be a layman or a cowherd or shepherd. This was the commentary. Even that about that God particle, is there any commentary which are flown afterwards? Nothing. And at the same time, here also, I say that it is a subtle microiota. It is a subtle microiota where Anandamurti, 1979, he himself declared that in near future, the scientists will develop a sophisticated microscope which can visualize crude microiota, but subtle microiota cannot be traced by a crude instrument. Whether can it be neglected? If it is not, then what was the conclusion of that scientist? The group of scientists, that a particle is there which could not be traced, which is the main particle for the energy. Likely there is going on, and at the same time about these koshas also. Koshas can be analyzed in a laboratory. Kosha it itself is totally the activation of the body, unit mind. Pancha koshatmika jaivi satta kadali pushpavat. There is a sutra for this. Human unit mind is such that pancha koshatmika jaivi satta kadali pushpavat, like plant and flower. Can it be put in an analysis in a laboratory? No. It depends on the action and activity of a individual or unit mind that will be analyzed. For example, while performing actions totally through physical body, crude body, then the related kosha will be kamamaya. And when the action done through body, physical body, that is kamamaya, and the resultant of action and reaction will be stored in manomaya. And out of that manomaya, if there is analysis, good and bad and upliftment it will be atimanasmaya kosha. Out of that, any gist, higher development will be vijnanamaya kosha. And after that vijnanamaya kosha comes hiranyamaya kosha, which is the seat of higher than the that means level of individual mind. यही है ईशावास्योपनिषद, हिरण्यमय कोश परे आत्मस्थिति. Then हिरण्यमय कोश परे आत्मस्थिति, can it be that Atman can be put in the laboratory and it can be commented? What is Atman? Can you define? I can define according to the science, because I am the follower of Ananda Marga. He had given a lot of with the comparison of modern science, spiritual analysis, spiritual outlook. Even now they have to, future is there to write in the terms of modern terminology. Then what is Atman? What do you say about Atman? Even you cannot analyze your Mahat Aham Chitta, then how can you comment on Atman? But the thing is this, AVADHESH being from a representative from modern medicine, he's somewhat confident about the Indian Bharat heritage, but whereas Harishji sitting in Toronto or somewhere in Canada, seems that little bit not so conclusive. I feel it very sorry. If anything is there in terms of spirituality and modern science, I can give a lot of references out of Anandamurti's pravachanas. Thank you very much. Thank you, Damaji. Please let us come back to this point again as the discussion progresses. Hamare saath hai, I cannot identify the name. Khali dikhai de raha, MS. Namaskar ji. I don't know if you have something to add to our discussion today. I don't know who. She is wife Momita Sharma. Momita ji, namaskar. Momita ji, namaskar.
Domaji, thank you for pointing this thing. I think from my side, हमारी तरफ से, I have just put 1 or 2 points here. There is an article, All India Institute Ayurveda, Delhi से एक journal निकलता है जी, Journal of Case Studies. अब उसमें January-March 2019 issue में एक editorial है तनुजा नसरी जी के, Integrative Approaches in the Field of Healthcare, Way Ahead in the Benefit of Mankind. What is the way forward? And so today's discussion is very important for that, to resonate with some of the points raised by Tanuja Nesri ji in this article, editorial. May I point us to this? Now, I think what AVADHESH ji has offered us today is an opportunity for that bridge making. And from a point of strength, and he has the patient access, he has a wish to make this bridge happen between modern medicine and our systems. Domaji, I think Harishji's comment is more a way to probe. I think he's being only probing the mind of the other person, but I think he agrees fully about the modernization that is required. But he wants to make sure that the deep principles of Ayurveda must not be diluted, number one, must not be distorted, number two. And he feels that when we look at the way it is being approached today, he feels sad that there is a lot of distortion and a lot of dilution of the deep concepts. And deepest in that is this issue of prana and the issue of the, and when we go from there into the world of yoga systems, then it gets even more important that the knowledge system is not distorted. I think that is Harishji's comments. I want to see if there are any more comments from the floor before we give the last word to Harishji and then AVADHESH, and then I return the floor back to Pavanji. Harishji, aapse kuch ho, whether you wanted to add something last minute. My understanding is both yourself and AVADHESH are on the same page. Yes. So there is no difficulty here. AVADHESH is saying he understands that we need to keep the knowledge system undistorted and not diluted, and we should be as close as possible. So AVADHESH ki comment ki Haridra will work better than curcumin is a reflection of that thinking, which is, I think, similar to what you are offering and what you are wishing, Harishji. So there are 2 points. We are discussing the philosophy today, and जब हम ड्रग की बात करेंगे तो उस पर भी काम करेंगे कि हरिद्रा को कैसे हम रिफाइन करके उसके एक्टिव मॉलिक्यूल को निकाल के कैसे हम उसको फार्मास्यूटिकल की तरफ ले जाएं, वो एक अलग चैप्टर है. क्योंकि इट इज ऑलवेज ए प्रैक्टिस कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम सिंथेटिक में ले जाएं, बिकॉज हमने लार्ज पॉपुलेशन को अगर फीड करना है तो वो हमें उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए. सपोज आज हमें कोई नीम से एंटी कैंसर ड्रग नीम की रूट से मिल जाए कि नीम के पेड़ में कोई एंटी कैंसर ड्रग है, तो कितने पेड़ नीम के हमें उखाड़ने पड़ेंगे उस ड्रग को बनाने के लिए. वी नीड ए सब्स्टिट्यूट. ये हमेशा एक प्रैक्टिस रहती है कि नेचुरल मॉलिक्यूल को हम फाइनली लार्ज पॉपुलेशन को, जो बिलियंस ऑफ लोग हैं, उनको देने के लिए हमें उसमें जाना पड़ता है. दिस इज व्हाट द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज. बट द पॉइंट इज, जो मैं एम्फसाइज करना चाहता था कि कई बार मॉडर्न साइंस के लोग आयुर्वेदा में आके वो फिर अपनी टर्म्स उनको देने लगते हैं. लाइक कॉस्मिक एनर्जी इज वन एग्जांपल. ये मॉडर्न टर्म है, लेकिन जो वास्तविक आपका सिद्धांत है ये तो पुराना संस्कृत में लिखा हुआ है. बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसलेट करके उसको नई शेप देने की कोशिश की. वो बेसिकली तो आयुर्वेदिक ही है, वो
पुरानी चीजें ही हैं। जैसे मैं अवधेश जी के लेक्चर को आज थोड़ा थोड़ा साथ में एनालिसिस कर रहा था। हमारे यहाँ चिकित्सा चतुष्पाद का सिद्धांत है। आचार्य चरक ने लिखा है कि जो चिकित्सा है वो सिर्फ औषधि से नहीं हो सकती, जैसा कि डॉक्टर अवधेश जी ने कहा भी। तो चिकित्सा के लिए उन्होंने चिकित्सा चतुष्पाद के चिकित्सा के 4 पिलर्स होते हैं, वो बहुत 5000 साल पहले लिख दिया और वो आज भी सिद्ध है। उसी तरह जो शुरू में इन्होंने डॉक्टर अवधेश जी ने ये कहा कि ममता की कमी और ये सब कुछ बिल्कुल वही है जो आचार्य चरक ने आचार रसायन में लिखा है। वो एग्जैक्ट वही है, बल्कि अगर आचार रसायन को पढ़े वो उससे भी एलेबोरेटेड है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा सोसाइटी के प्रति किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। ये पूरा एलेबोरेटेड है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है। और वो सारा कुछ अनफॉर्चुनेट पार्ट ये होता है कि लिखा तो आयुर्वेद में है, बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन के लोग उसको अपना बताने के चक्कर में कि हमने रिसर्च किया है वो लग जाते हैं। तो मैं यही डॉक्टर अवधेश जी से जानना चाहता था कि हम लोगों के पास तो ओरिजिनल आयुर्वेदिक नॉलेज है जिसको हम रोज पढ़ते हैं, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी नॉलेज को मॉडर्न मेडिसिन के पैरामीटर्स पे उसको हम फाइंड आउट करें कि वो कितना साइंटिफिक है और कितना इफेक्टिव है और कितना सेफ है। और लास्टली, जैसा डॉक्टर मदन जी आपने कहा कि बठिंडा जो है, दिस इज अनफॉर्चुनेट कि बठिंडा जो है एक कैंसर कैपिटल ऑफ द पंजाब या कैंसर कैपिटल ऑफ द कंट्री बन रहा है। तो मैं डॉक्टर अवधेश जी का ध्यान, I want to draw his attention towards one crop which is grown in Bathinda. वो क्रॉप है जी कॉटन सीड्स, कॉटन प्लांट। जो कॉटन प्लांट है वो बठिंडा में होता है, वो बेल्ट में उसकी खेती होती है। एंड कॉटन सीड ऑयल हैज बीन फाउंड वेरी इफेक्टिव एज एंटी कैंसर। और हो सकता है भगवान ने वहां रेमेडी पैदा की हो, हम उसको यूज ना करते हो, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान लगाएं। कॉटन सीड में गॉसिपॉल होता है, गॉसिपॉल, इसका नाम गॉसिपियम, कॉटन प्लांट का नाम गॉसिपियम होता है। एंड गॉसिपॉल हैज बीन फाउंड वेरी इफेक्टिव इन मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स, इवन इन सर्टेन मेटास्टेसिस स्टेजेस। तो उस पर भी काम हो सकता है। उसमें हम आयुर्वेदिक टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं कि जैसे प्रोस्टेट कैंसर है या कोलन कैंसर है, उसमें हम जो कॉटन सीड ऑयल है उसको बस्ती के तौर पे, मात्रा बस्ती के तौर पे इस्तेमाल करके दे सकते हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जो मॉडर्न साइंटिस्ट करें, लेकिन उसको आयुर्वेद में रखें। Harishji, before I pass the floor back to Avdesh ji and then to Pavan ji, आपसे एक सवाल जी, कि I feel there is a perfect match here कि अवधेश जी का जो इनिशिएटिव चल रहा चंडीगढ़ में और आपके जो डिस्कशंस जो चल रहा यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क वालों के साथ, मेरे दिमाग में I think there is a good synergy here कि बहुत कुछ हो सकता है। कि you have given one example कि गॉसिपॉल के बारे में, कॉटन ऑयल के बारे में, और I think if we can make a proactive discussion between Toronto और अवधेश जी चंडीगढ़ में, अवधेश जी का जो सेटअप है और उनके जो नेटवर्क है, इनके they have a very large network, और आपके वहाँ टोरंटो में यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क, I think just an informal discussion, I think you will easily identify some areas of common interest, you know, some very active areas of common interest. I feel both of you are on the same page and a lot can come out. So please, Harishji, with your permission, if I can share your details with Avadeshji so that we can come together in one discussion. Yes, sir. I have shared my email. Harishji ka aa gaya.
email. और अवधेश जी, it is my request कि please consider this possibility कि थोड़ा सा give us your time a little bit to develop some strategic new initiatives from where we look at the two interfaces. So the floor is yours, Avdesh ji, before we pass it on to Pavanji for the concluding. Thank you, sir. मैं तो सिर्फ ये बोलूँगा that competition is human, cooperation is divine. We need to cooperate to take it forward. Very good. Very good. Thank you, Ji. Thank you, Ji. Thank you. Very well. Very, in a few words, in 4 words, you have given us the essence of where we should be going ahead. The reason why I am saying Toronto and Toronto University Health Network and Chandigarh is partly because of that there is a big population from Punjab who are there in Toronto. And there will be a natural synergy which will enable many things to happen. So thank you for mentioning that competition is human and cooperation is divine. Thank you, Ji. Thank you so much. I will follow up with both yourself and Harishji so that we can come together and discuss a few more things for the future. Harishji, with your permission, we will try and meet again. I am grateful. I am grateful, sir. Madanji, are you aware of that? Madanji, are you aware of that? Any curry prepared without haldi, haridra, उसको शैतान का सालन माना जाता है साउथ में. माने how much importance would have been given, whether it is in practice in Western countries? No, not at all. Even how many people are knowing this and do not know? Nowadays, it has become that curcumin is a chemical which is anti-carcinoma. Then the people are running after the capsules of curcumin. It's a wonderful thing. And at the same time, AVADHESH was clarifying whether curcumin as a capsule will be more effective or taking Haldi as a more effective. AVADHESH was perfectly right. क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट नेचुरल वे में देने में ही बहुत ही लाभान्वित होता है. उसको जो है ना केमिकलाइज करने के बाद जो है ना उसका साइड इफेक्ट भी मार सकता है, उसका और कुछ भी हो सकता है. अगर अब घर में घर की औरत भी सालन में अगर थोड़ा सा हल्दी ज्यादा डाल दिए तो कड़वा बन जाता है, तुरंत पहचाना जाता है. they are experts how much should be put. That is why it is the culture of Bharat, it itself is oriented with medicine. Later out of Bharat, they come and analyze. Now they put their own instrument and laboratory. But we need not get worried. And we need not get that should be assented by them. Then only we will be qualified. Nonsensical, I say. Thank you very much. Thank you, Jagdish. Domaji, your comment is valid, important. Isme the issue of modernization, you know, I will just add this last bit before I return the floor to Pavanji. Domaji, I will give you one example. Banlo, Madan sir, can I add one thing to what please, I just wanted to आपको भी बताना, सबको बताना चाहूंगा. We have been choosing haldi with all our cancer patients, and you know, as you are aware, हम मंत्र जाप करके कोई भी चीज पेशेंट को खिलाते हैं, कोई भी मंत्र जाप करके. What came to my mind was haldi is the best antiseptic, the best antibiotic, the best anti-cancerous drug. What I feel, not yet proved, I haven't yet approved it, it's my feeling. Now, how does haldi know how to act? So what is happening is, this is called a quantum food, wherein the haldi knows how to act. Once we have energized it through mantra,
is what is my feeling. Just wanted to add this to the our discussion that is ongoing. Thank you, Avdesh ji. This आपने जो बताया कि quantum intelligence, and ये Jerry Pokorny की जो बात जो मैंने उठाया, that is indicating this whole intelligence at the subtle level. There is an intelligence. We may be a select group who are happy to digest this. Domaji in particular is very appreciative of this area. But we need to make the rest of the community join this line of thinking. And we shouldn't give them opportunity to be critical. If I take Haldi ke baare mein agar thoda sa bataye ji, Haldi, there are so many ecotypes of Haldi. ठीक है, एक बात. अगर हमारी northeast की तरफ जाओ, we get very specific Haldi that is grown there, that has a special attribute to it. Now, modern medicine wale and modern biochemists will ask, how do you standardize this Haldi? So we are saying, okay, this is that modernization that we are hoping to do. Ki Meghalaya mein jao, to there is a very special type of Haldi. And we are saying this Haldi is Curcuma longa. It is not a different species. It is the same species. It has grown in this desh. Us desh ka, it has absorbed the quality of that land. Whatever that quality is desh ki gun, it has absorbed this. And that might have an effect. Jo aapne jo bataya Avdesh ji ki mantra chant karke jo use hoti hai, usme that has a more beneficial effect. There is a science behind this, and this science awaits discovery. And it is only this dialogue between the ancient sciences, the traditional sciences, and the best of modern science that will make us find the direction for the future. And that direction for the future is very, very important for all of mankind. And you have emphasized that today. Adi Shankara has emphasized this a few thousand years ago. And before that, there are many other minds who have emphasized this. Nagarjuna has given this, the second Buddha has given this. Prior to that, we have all our rishis who have mentioned this. So our focus should be in that direction, to keep constantly the search for new chapters in the book of science. We are saying there are chapters that are written, the commentaries are written, but there may be some new chapters. And one of the most important chapters is the question that Domaji and Harishji is talking about, that energy concept, that energy. What is this thing called the energy? And Harishji has explained very nicely what is that energy. But as we go along, as we form this relationship and as we progress in our work, I think we will generate a direction for the future. And I think this is the most important thing. There is a very important direction that we can provide for where healthcare should go, where modern science must drive itself to pull healthcare out of a morass that it is in right now. It is in a very sad state. My finishing comment, which might seem very undiplomatic, is that the nation with the largest health budget has today in excess of 1 million deaths ascribed to COVID. And this country spends trillions of dollars, trillions, not even billions, trillions of dollars on healthcare. But their statistics for COVID mortality is unfortunately the worst in the world. With those few words, Avdesh ji, my pranams to you. We are all deeply appreciating your affinity with our platform. We look forward to your enthusiasm, encouragement, energy to guide us in the future. And all the senior people here, Jagdishwar Domaji, Agnihotri ji, Rajan Patangar ji, and Harishji, and many, many others who are here with us. We are looking to you for guiding us in this initiative, particularly in cancer. I know you have interest in many other areas, also integrative care for many other, for
other metabolic disease, etc. These are all areas that we are interested in, autoimmune diseases, etc. Harishji here, for instance, has a case studies of over 20,000 people with ulcerative colitis, major problem. And he has been treating with amazing success. So these are all areas we are wanting friendship with the contemporary modern medicine, and we look forward to people like yourself to guide us in that space. So thank you again, AVADHESH, for joining us today. Thanks to Sunil ji, who had to leave in between. I return the floor to Pawan ji. Pawan ji, namaskar ji. Madan ji, mortality is comparatively less. Why, you know? There is at least faith in every individual towards God. And whereas the most mortality, where much is there, they are totally materialistic. They do not have such a heritage. That is why it would have been. I need not comment, because this discrimination will go a long way and the commentary will become a bitter one. That is why I don't want to, because a sweet word should be imparted in a sweet way. I ask the materialistic people, come in the path of spirituality. Otherwise, let us debate. Let us debate. Thank you, Dharmaji. Thank you. I have put one cancer I have put one reference there from Stanford University. They are also coming into your path, Dharmaji, about spirituality. And here we have, today we have completed 347th webinar. We are approaching the 350th. 348th is tomorrow, 6 p.m. We have Dr. Vikram Shivappa from Bangalore. We have Prasant Sarkar from Kolkata. And we have Sushant Meher from Balangir. So this is a very important area, metals, minerals, and how they affect our health and well-being. And before I give the floor back to Pawanji again, I just want to thank Pawanji and his team of people. Momita ji is here with us today. Momita ji, namaskar. And also we have our Aaj Hamare Saath Hai Nahi, but he is there with us in all our earlier programs. Pawanji, I leave the floor to Pawanji. Jayesh Thakkar ji is the person I have in mind. Sir, he is traveling at present. Jayesh is traveling. So Jayesh is traveling today, so he cannot be with us today. But these are our anchor people in Kolkata. And Pawanji's work is being recognized more and more. Pawanji, congrats from all of us for your Puraskar. And West Bengal Ratan. So we are, without your energy, we will never be able to hold so many people together from Toronto, from Mumbai, from Chandigarh, and from Uttarakhand, Agnihotri ji, Vishnu Prasad ji from Guwahati, and so many other people who are here with us. So please continue. This is real cosmic energy I am receiving in the form of your blessings. All of you, really, I am grateful. With folded hands, we are celebrating the beauty of Vedic sciences, the beauty of Ayurvedic sciences, the beauty of Ayush systems for the future of health and care globally for the benefiting mankind. And I think with the ambassadors like AVADHESH ji, who is bringing the best of modern medicine and decades of experience and training into our field, I think we can only go from strength to strength. So thank you, AVADHESH ji. Pawanji, I don't know if Agnihotri ji had to sign off because he was not feeling well. I don't know if he is still with us. Yes, he is with us. Achha. Agnihotri ji, pranam. Agnihotri sir, pranam. Madandi, in the whole of pages of Ayurveda, there are tantra. Every chapter is referred as tantra, but there is no like that Kaumara tantra, Prasuti tantra, Shalya tantra, Shalakya tantra. I do not know in what way the terminology goes for Vedic. Actually,
Tantra is because the given by Sadashiva, it is a tantric practice. It is not much of pages and pages. That is why it's still till now the formula are surviving. And whatever we turn or refer today, either in your verbature or in anybody's verbature, of somewhat before 5,000 years, because script was not there beyond 5,000 years. And whereas the emergence of Sadashiva was 7,500 years back, what Anandamurti told. Likely we have forgotten, but the culture and the practice was there. That is why you call it that Tantra. I think Tantra is much practical. Is process, sir. Thank you. Sir, I think Tantra is the process. Perfectly, it is practicals, much practicals, less theory. Thank you, Damaji. Thank you, Avadhesh. Pavanji. And the definition of Tantra also, Tanoti Vistarayatu Tantra Parikirtitaha. The definition of Tantra, Tanoti Vistarayatu Tantra Parikirtitaha. And about mantra, Mananata Tarayatu Yastu Sa Mantra Parikirtitaha. We are moving away from our topic, sir, and time is also over. I humbly request you to brief. Now I would like to request Professor B.K. Agnihotri, sir, if he is well. Respected Agnihotri ji, आपके आशीर्वचन के बिना ये वेबिनार अच्छी नहीं होगी. तबीयत ठीक नहीं. Agnihotri ji is not well. फिर Pavan ji, we will request either Rajan ji to say a few words just to draw this event to a close. Agnihotri ji, Agnihotri ji. Agnihotri ji, namaskar ji. I hope you are feeling well. Namaskar. I was listening on the whole of the seminar. धीमे बोलिए सर, धीमे बोलिए, शांति से बोलिए. आपके दो वचन आशीर्वाद के हमारे लिए आशीर्वाद. Thank you so much. And भगवान करे आप जल्दी ठीक हो. Thanks for your such a great confidence over me. I don't know why it was 5:55 and I was very much ready to join, and I joined very well. By that time, I was having a very severe vertigo. So that resulted in a form of some upset in abdomen leading to either defecation or vomiting. So I just attended starting off Dr. Avadhesh Pandeyji's. Otherwise, I just took rest, get my blood pressure checked. It was almost at higher side. And then I went to toilet once, then vomited 3 times. And then I decided to put my apology and take rest. So it may be because of some kutu atta, since we are on fast study, it is started with the Navaratri. So by that time I was listening everything off and on, taking a rest on bed. So today's presentation is very well, and Dr. Hari Sharmaji's discussion along with Dr. Domaji's discussion when the floor was made open, Dr. Avadhesh Pandey, as I told earlier, he is a person coming from allopathy, but understood the real sense and Ayurvedic principles. So he correlated everything, and he is very much ready for the example or for the couple family, which Dr. Pawan Sharma started, that doctors decided that he has got only 1.5 months or 2 months life. He paid his full attention, and he is ready that whatever he can do, he will do. But just send a video call or video message and they will do it. So I hope so that God will help to this family by the great working of Dr. Avadhesh Pandey. My all support, blessings and good wishes for that family along with the support of Dr. Pandeyji. Then what I feel that cancer is itself a very deadly thing, and it starts defeating the person's immunity itself. That one got cancer, then life is very limited, medicines are very limited, painful situations there. Let us hope some for betterment.
So for your friends, family's case, Dr. Pandey will do a lot, whatever he could be in position. So rest is fine. Discussion was very good. Today is 347th webinar is there. So my blessings and my support to everyone. Our speakers are really great. They are doing a great job for general public and for all our platform and our all the presence persons. My respect and regards. So thank you very much. Thank you, Ji. Get Thank well. you, thank you. I salute your presence, sir. In this condition, you have blessed us with concluding remarks. Thank Really. you. Agnihotra, get well soon. Navratri ki time pe energies वगैरह थोड़ा, it's a complicated time of the year. Namaskar ji. Get well soon. Namaskar. Namaskar Janji. Rajan ji. Thank you. Shubhratri. सभी को प्रणाम. हरीश जी प्रणाम. नमस्कार जी. राजन जी नमस्कार.